सूत्र स्थान में लिखी जिसको हम टच नहीं करते। पर अगर हम बात पित्त का पंच महाभूत धातु नहीं जानेंगे तो इस यूनिक लाइफ साइंस को यूनिक लाइफ साइंस सर्वजन हिताय कैसे बनाएंगे? हम श्लोकों तक सीमित रह जाए। श्लोक पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कहता उसको समझना जरूरी नहीं है। मैंने भी बहुत सारे श्लोक गीता के पढ़े, चरक के सूत्र निकाले, पर अगर आज मैं उन श्लोकों को एजुकेट बोलता रहूं और सबको उस भाषा में आपके लायक ना बता पाऊं, एक अपनी सोच ना शेयर कर पाऊं, तो उस आयुर्वेद को तो हमने ग्रंथ में छपा दिया। हमें यूनिक लाइफ साइंस तो वो बनानी है, वो प्रूव करनी है हम सबको। और इस सबके लिए पहले हमारे चिकित्सक जो इसको चिकित्सा करते हैं उनको जागृत होना है, उसके बाद पब्लिक को शेयर करना है कि कैसे हम स्वस्थ रह सकें इस विज्ञान को उपयोग करके, और प्रैक्टिकली उनकी भाषा में शेयर करना है। इस काम को मैं डिफरेंट मंचों पर बहुत शेयर कर जाता हूँ। इस कोरोना में तो पता नहीं, लोग कहते हैं कोरोना ने मतलब डिसास्टर था, कोरोना ने मेरे लिए बूंद था, आशीर्वाद था। मैं तो इस रूप में कहता हूँ क्योंकि इस बहाने से कितने लोगों से कनेक्ट हुआ। मैं मदन भाई से कनेक्ट नहीं हो पाता अगर ये जूम का हम यूज ना करे होते तो। इस कोरोना ने मेरे लिए बहुत बड़ा वो दिया। पर इन पवन जी, एक्सीडेंटली पवन जी से भी मेरी एक मुलाकात हो गई, पहले कोई परिचय नहीं था, और भाई ने ऐसा मुझे लपेट लिया कि वो छोड़ते ही नहीं। अब मैं सोच रहा था कि यार मतलब मुझे साइंस में क्यों बोलना। ठीक है, 72 में मैंने बीएससी कर लिया था सर। उस जमाने में बीएससी इंग्लिश मीडियम में होता था, हिंदी में पढ़ाई नहीं जाता था, तब तो साइंस वाइंस थी। अब तो हम आयुर्वेद के विद्यार्थी बन गए ना। पर इस यूनिक लाइफ साइंस को, फंडामेंटल को अगर हम समझ तो लें पर समझ के समझा ना सकें तो सर उसका कोई उपयोगी नहीं है, कोई वो नहीं है। हम आत्मावलोकन करें, आपस में आयुर्वेद की तारीफ कर सकते हैं। आयुर्वेद बिल्कुल ऐसा नहीं कि तारीफ आप करें ना करें, आयुर्वेद तो आयुर्वेद रहेगा। जंगल में अगर फूल रखा खिला हुआ है तो आप तारीफ नहीं करें, जंगल में फूल तो खिलेगा। आयुर्वेद तो वो है, आयुर्वेद तो पनपता ही रहेगा। आयुर्वेद किसी का परंपरा में किसी के लीडरशिप की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पर हम जनोपयोगी बना सकें, जनता तक पहुंचा सकें, हमारे चिकित्सक पढ़ने के अभ्यास करें। आज अग्निहोत्री जी को मालूम है कि इन्होंने गुरुकुल ऋषिकुल दोनों कॉलेजों में मुझे एक चरक संहिता पे चरक पे टॉक देने के लिए बुला लिया। मेरा एक प्रश्न था, आप लोग चरक संहिता पिछली बार कब पढ़ी थी? चरक संहिता को कब पढ़ा था? अब आप चरक संहिता के दर्शन तक ना करें, चरक संहिता को पिछली बार कब पढ़ा था ये ना बता पाए, पर आप यूनिक लाइफ साइंस को कैसे डेवलप करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। मुझे आज भी आयुर्वेद विभिन्न विषयों से और मॉडर्न को भी पढ़ना पड़ता हैगा, तब आज मैं एक चिकित्सा की उसमें फॉर्म में आ पाता हूँ। ये मेरी आग हैगा। हम सब इसको अगर जागृत रहें, करते रहें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पवन जी की, मदन जी की यूनिक लाइफ साइंस, पवन जी की हवा लगाएंगे, मदन जी प्यार देंगे, ये यूनिक लाइफ साइंस सबसे हिताय बनेगी। ये मेरा सोच है। आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ओजस्वी मार्गनिर्देशन के लिए। आपने गजब सब्जेक्ट को बिल्कुल मतलब और क्या चाहिए, और चाहिए आशीर्वाद में। जय हो, जय हो। Now I would like to request Dr. Neeraj Thakur, Founder Director, Ayurvedic Holistic Healers Clinic, Deputy Chair, APCAS, Director Treasurer, GHARS, Australia. Welcome, welcome Dr. Neeraj, welcome. Thank you sir, and सबको मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर आलोक ने भी जो बताया, वेरी इम्प्रेसिव टॉक्स बताई उन्होंने। सही बताया कि भाई आज की डेट के बीच में हमें जो आयुर्वेद के लिए चाहिए है वो यही है कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर करते हैं, वो प्रैक्टिकली श्लोकों से अकेली नहीं कर सकते हैं। हमें उसको प्रैक्टिकली अप्रोच जरूर रखनी है। और जो हमारा सिद्धांत है आयुर्वेद का, जो चिकित्सा सिद्धांत है, पंच महाभूत और जो त्रिगुणा दोषस और सारे जो इम्बैलेंसिंग ऑफ धातुस जो है, वो सब कुछ हमको कंसिडर रखना पड़ता है। और सेकेंडली, हमें किसी डिजीज का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ रोगों का विश्लेषण ही देखना है कि भी उसके बीच में कौन सा दोष और कौन सा पंच महाभूत और कौन से धातु उसमें दूषित है, या रोग का स्थान कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली हम चिकित्सा कर सकते हैं। एनीहाउ, जैसे आज नेशनल साइंस डे है और शुरुआत इंडिया में हमारे वही रमन जी साइंटिस्ट जो हुए, उनकी एक जो रिसर्च है उसके ऊपर बनाया जाता है, जो कि 28 फरवरी 1928 से स्टार्ट हुआ। और नेशनल साइंस डे मींस कि साइंस जो हमेशा तरक्की पे रहती है, हमेशा कभी रुकती नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ नया
इनोवेशंस आता रहता है, उस चीज को हम साइंस कहते हैं। हमेशा जो चलने वाली गति है वो साइंस है। बेसिकली सिस्टमेटिकली जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट पे वो जो कांस्टेंट बदलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। आज जो मत है उसका कल मत कुछ और होता है, उसके ऊपर कुछ और रिसर्च हो जाती है, एंड कीप ऑन चेंजिंग हायर लेवल में। तो मेरा जैसे साइंस ऑफ लाइफ के लिए लेके चले तो सबसे अच्छा तो टॉपिक मेरे लिए भी यही था कि आयुर्वेदा से बेटर साइंस ऑफ लाइफ कहाँ हो सकती है, जो कि एक तरह से शाश्वत अनादि, और जो जो आज से हजारों साल पहले कही गई थी वो आज भी उसी लेवल पे कायम है, और हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सर्च नहीं हो रही है। रिसर्च के लिए जो चीजें कही गई हैं, जो शास्त्रों जो कही गई हैं, जो चिकित्सा प्रणाली चलती आ रही है, उसके ऊपर हम और रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको आज साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं, मैं आज अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ और एक इंडिया की जो साइंटिफिक जो 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 वहां की जो एक प्रणाली जो जो वहां पे चिकित्सा प्रणाली हम लेकर चलते हैं, और जो बाकी के जो अदर कंट्रीज में लेकर चलते हैं, जहाँ पे इसको स्ट्रिंजेंटली इसको लेके चलते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर इसके ऊपर कितनी ज्यादा हम इसको ऊपर मान्यता दे सकते हैं, कितना हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि पिछले कई सालों से कई बड़ी बड़ी कंट्रीज में इसकी आयुर्वेदा की हमारी रिकग्नाइजेशन हुई है। बट फिर भी अभी भी हमें भी बहुत काम करना है कि इसको उस लेवल पे लेकर आना है कि जिस लेवल पे हमारी आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन है। और मुझे इस पे पूरा विश्वास है कि हमारी जो जो आयुर्वेद है, जो साइंस ऑफ लाइफ है, इसमें पूरे वो प्रॉपर्टीज हैं और पूरे जो गुण हैं जो आज की डेट में मॉडर्न साइंस के साथ उससे ऊपर जाकर है। मॉडर्न साइंस को सिर्फ एक लहर बनाकर सब पूरे देशों ने उत्पन्न किया है। हमारी सिर्फ आयुर्वेद जो प्रणाली है हिंदुस्तान में, इंडिया में रहकर, कुछ कोई कंट्रीज में रहकर दबी तौर पे रही है, या फिर एक कह लो कि आप ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रही है, जो पर्टिकुलर जिस लेवल पे वो डिस्कस होनी चाहिए थी इंटरनेशनल लेवल पे, या जिस लेवल पे वो आगे जानी चाहिए थी, वो उतने लेवल पे अभी तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कुछ सालों से उसके ऊपर काफी काफी ज्यादा चर्चा है और काफी रिकग्नाइजेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आयुर्वेदा साइंस ऑफ लाइफ को मैं इसको एक टॉपिक देना चाहूंगा, ए सस्टेनेबल हेल्थ। सस्टेनेबल हेल्थ यानी कि जो एक टिकाऊ है, ये टिकाऊ एक हेल्थ साइंस है जो हमेशा के लिए टिकाऊ रहेगी। उसका सस्टेनेबल हेल्थ से हम लेके का चलते हैं, द हेल्थ इज पर्सनल कमिटमेंट टू मेंटेनिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन हेल्थ थ्रू प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव मीन्स। सो आज की डेट में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो और जो हमारे भी आज इंडिया भी आज हाफ ऑफ द इंडिया इज नाउ वेस्टर्न। सबसे बड़ी पेंडेमिक चल रही है ओबेसिटी की, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज। और गुड हेल्थ जो है, जो कि समथिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड, वो नहीं मिल रही है। और मोस्ट ऑफ अस focus on our health when we are ill or have had a major catastrophe in our life, when it simply might to be too late। जब तक हमारे साथ कुछ होता नहीं है बुरा, जब तक हमें पूरी रोगों की प्रसवावस्था नजर नहीं आ जाती है, जो कि नॉर्मली मेरे पेशेंट्स आते हैं, उनको सिम्टम्स उनको पहले बता दो कि ये तुम्हारे साथ होगा, तुम इसका अगर ये तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये आने वाले टाइम में होगा। पर पेशेंट को कोई वरी नहीं रहता कि जब तक उसको वो स्थिति, डिजीज का नेम नहीं उसको मिल जाता, तब तक वो कंसिडर नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है, जो कि एक बहुत बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। और आज की डेट में सारे के सारे मैक्सिमम लोग हैं जो किसी न किसी डिजीज से ग्रस्त होते हैं, लेकिन वो साइलेंट फेज में चलते रहते हैं। जब पूरा अटैक होता है तब उनको वो प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो डायबिटिक्स हो, क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो। अब ये सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं आज की डेट में, ये सीरियस इशू है वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो क्या है? आहार, और उसका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, और जो विहार है, जो कि आयुर्वेद में सबसे पहले माने गए हैं, त्रिस्तंभ माने गए हैं। आहार, विहार, निद्रा
और हमारा जो डिसिप्लिन लाइफ है, जो ब्रह्मचर्या का जो है, जो जो हमको जो वो उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये सब चीजें जो आज की डेट में जो हमारी साइंस आयुर्वेद ने हजारों साल पहले इंप्लीमेंट की थी, वो आज सस्टेनेबल हेल्थ जो जो इंटरनेशनल लेवल्स पे जो कंट्रीज हैं वो उसको अटेन कर रही है, लेकिन वो अपने लेवल पे कर रही है। जैसे कि आज कई कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लाइफस्टाइल कंसल्टेंट्स के नाम से कंसल्टेंट्स निकल रहे हैं। वो क्या करते हैं, आपका सिर्फ दिनचर्या को ठीक करते हैं, आपके सिर्फ आहार निद्रा और जो ब्रह्मचर्य, जो आप जो दिन के जो दिनचर्या आपकी जो है उसको ठीक करते हैं। अरे भाई, हमारे आयुर्वेद में तो पहली है, हमारे साइंस तो पहली है, पर हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट को किस तरह से कराया, कितनी उसको अवेयरनेस दी है, वो हमारे ऊपर है कि हमने उसको कितना उसको इन्फ्लुएंस करा है। लेकिन ये आज की साइंस उसको मानती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो मैक्सिमम है, जो रात को लोग सो जाते हैं, सुबह उठते नहीं है, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर उसका मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं। तो ये सब चीजें तो हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। आम का पाचन है, सारा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जो अग्नि मानदा, सारी ये सब बोलते हैं कि जो आपकी जो गैस्ट्रिक जो सिक्रीशंस हैं और जो सब कुछ आपकी जो ये जो डाइजेस्टिव हेल्थ है ये पुअर है, तो आपको मे बी यू आर प्रोन टू मेनी ऑफ द इलनेस इन योर बॉडी। तो ये इसका मतलब ये कि वो नॉर्मली रेगुलर एक्सरसाइज, टेकिंग केयर ऑफ व्हाट वी ईट, बट आल्सो मेंटेनिंग ए हेल्दी एंड बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। ये अब बोलने शुरू करेंगे बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, जो कि हमारे आयुर्वेद सबसे बोलता है कि भी, जिसमें एक श्लोक सबको है, सभी दिग्गज गण यहाँ पे बैठे हैं, सभी जानते हैं वो श्लोक हमारा जो है कि सब के सब जो हमारी जो सिचुएशन है, सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा मना इंद्रियता स्वस्थ इति अभिधीयता। जब तक ये हमारी सब कुछ ये प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चल रही होगी तो हम स्वास्थ्य की तरफ नहीं अग्रसर होंगे। और यही चीज आज की डेट में यही मानते हैं कि जब तक आप मेंटली कॉन्शियस नहीं हो, मेंटली आप जब तक आप ठीक नहीं हो, तो आप फिजिकली भी यू आर नॉट वेल एज वेल। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि जो ब्रॉड जो अभी जो आज की डेट में जो वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो 3 ब्रॉड थीम्स रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ लेके चल रहे हैं, वो लेके चल रहे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल, implications of a changing climate and sustainability in health system for the performance। अब ये सारे के सारे जो ये 3 फंडे हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, यहाँ पे जो हमारी हेल्थ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसके बीच के ये पॉलिसीज का आपको बता रहा हूँ। और ये मैंने अभी इसको ऊपर सर्च करा, इससे पहले मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, पर जब हमारा जो टॉपिक आयुर्वेद के ऊपर था तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या क्या दुनिया में चल रहा है। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में यही चल रहा है कि जो ये 3 चीजों पे इन्होंने बताया, जो हेल्थी लाइफस्टाइल है, एनवायरमेंटल और जो चेंजिंग क्लाइमेट है। हम तो बोलते हैं ऋतुचर्या हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऋतु संधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा विकार ऋतु संधि के बीच में है। जब ऋतुचर्या, जब ऋतु चेंज होती है तो विकारों का कुछ भी उत्पन्न होते हैं। तो ये सब चीजें हमारे उसमें है। और सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ सिस्टम, उसको किस तरह से टिकाऊ किया जा सकता है, उसमें इन्होंने ये बोला कि भाई जो कुछ भी अगर मेडिकल वेस्ट उत्पन्न होता है उसका मिनिमम कैसे उसको यूज किया जाए, मिनिमम उसका कैसे उसको मिनिमम टाइप पे उसको डिस्कार्ड किया जाए या डिस्ट्रॉय किया जाए, जिससे कि फर्दर जो है प्लैनेट्स को हैजर्ड ना, प्लैनेट हमारा जो है खराब ना, धरती को हमारी जो है एनवायरमेंटल जो है फैक्टर्स है वो उसके लिए इम्पैक्ट ना करे। और सिंपली हमारा आयुर्वेद तो पहली द प्लास्टिक एंड अदर आर्टिफिशियल मटेरियल्स हमारे ट्रीटमेंट में यूज ही नहीं होते हैं, जो कि एक आयुर्वेद को इको फ्रेंडली सिस्टम बनाता है। और जो कुछ भी बायो प्रोडक्ट आफ्टर द मेडिसिन इज बीइंग मेड, चाहे वो प्लांट बेस्ड है चाहे वो मिनरल बेस्ड है, वो सब नेचुरली सब कुछ अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है या कंज्यूम हो जाता है। तो उसमें हमारा कुछ भी इको बैलेंस इम्बैलेंस नहीं होता, इको बैलेंस को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। और सिस्टम जो हमारा की जो एनवायरनमेंट जो हमें देता है, which makes optimum utilization of natural resources from daily uses to the drug। और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मेन जो 3 फैक्टर जो हमारे जो गलत होते हैं, आहार विहार और जो हमारा निद्रा का जो प्रॉपर ना सेवन करते हैं, और जो अनबैलेंस्ड जो हमारा अनहेल्दी और अनबैलेंस्ड माइंड है, ये रोगों को उत्पन्न करता है। और इसी चीज को आज की डेट में जो मॉडर्न साइंस है वो इम्प्लीमेंट करती है। हमारी जो लाइफस्टाइल जो कंसल्टेंट्स हैं वो इन्हीं चीजों के ऊपर सारा सप्रेस करते हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर सारा कुछ बोलते हैं।
मैं आपको थोड़ा सा और कट शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे जो हेल्थ जो इन्होंने जो यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, जो जो ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो वेबसाइट्स है, जो यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि देयर बैलेंसेस, देयर थ्री वे बैलेंसेस ऑफ जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड स्टेट ऑफ माइंड। मोस्ट ऑफन जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। जो कि हम मानते हैं जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, चलो ठीक है, हमारा भी, हम भी कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है नहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जेनेटिक्स भी जो हुआ उसको, जो डिफेक्ट हो गया उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमारी जो 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 स्टेट ऑफ माइंड है, जो वो हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और किसी ने भी मैसेज भी लिखा था कि भी अभी इसमें मैसेज लिखा कि आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइड स्यूडो साइंस माना गया, फॉल्स साइंस। और वो इसीलिए माना गया कि ये ट्रेडिशनली इसको लेके चलते हैं कि हजारों साल से जैसे चलती आ रही है वैसी चलती आ रही है, ठीक हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट। जैसे कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी रेसिपी चलती आती है ना, कोई करी की, मसाले की, कुछ भी रेसिपी चलती आ रही है, वैसे ही रेसिपी चलती आ रही है, इसको ये नहीं मानते हैं। लेकिन ये चीज हमारे को उनको शो करना है। और जो मॉडर्न साइंस है और जो हमारी आयुर्वेदिक साइंस है, इन दोनों चीजों को, हम इन दोनों चीजों को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, रुक जाइए। सॉरी सॉरी। तो अब मॉडर्न साइंस के यहाँ पे भी मेरे साथ कई रिसर्च फेलोज हैं, यूनिवर्सिटी के में प्रोफेसर हैं, उनके साथ हमारी सिर्फ यही बात रहती है, या तो आप आयुर्वेदा फिलॉसफी को समझो, आयुर्वेदा का जो मोड ऑफ एक्शन है उसको समझो। अगर आप उसको समझ के कुछ रिसर्च कर सकते हो तो वो लेवल उनका नहीं है। इनका लेवल सिर्फ उतना है कि जो आज की डेट में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर कंपाउंड का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर वो काम कर रही हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर लोक ने बात करी, उसी चीज को सिद्धांत के ऊपर मैं बात करता हूँ। हम किसी एक द्रव्य से, हल्दी से, ये कुरकुरे में जो उसका जो एल्कलॉइड है वो निकाल लेते हैं और उसको एक्टिव कंपाउंड को यूज करते हैं एज पर इट इज मल्टीपल डिसऑर्डर्स के बीच में। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि जब हमारी चिकित्सा का सिद्धांत पंच महाभूत है, तो उसमें से एक आपने कॉन्स्टिट्यूट उसका निकाल कर बाकी के जो वो छोड़ दिए, तो वो उसका मूलभूत तो वही रह गया। उसमें आयुर्वेदा कहाँ पे आई? उसमें आयुर्वेद तो कहीं पे भी नहीं है। हमें तो जो जैसे है उसको वैसे कंसेप्ट को लेकर उसके ऊपर रिसर्च वर्क कर कर, वो अगर हमारे को डाटा हम उसको इकट्ठा करते हैं और साइंटिफिकली उसको प्रूव करते हैं। अब साइंटिस्ट है जो, वो साइंटिस्ट ये इस लेवल को नहीं समझता कि उसको ये नहीं पता कि ये पंच महाभूत के बीच में से ये हम उसको रस गुणे वीर्य पाक उसको कैसे लेके चले, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। वो उसको उसको समझे, उसके लिए समझे, तो उसके लिए नवी साइंस, अगर वो साइंटिस्ट है तो उसको निकालें। जो कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई उसको तुम समझते हो तो वीर्य विपाक को समझते हो, तो हम तो बोलते हैं, तुम भी तो बोलते हैं ना, ये स्पाइसी है, ये हॉट है, ये कोल्ड है, ये हॉट है, हम तो बोलते ही हैं कि भी ये उष्ण वीर्य है, ये शीत वीर्य है, ये इसका ये विपाक है, उसका भाई कटु विपाक है। जब षडगुण रस हम मानते हैं तो तुम भी तो रस मानते हो, टेस्ट मानते हो। उसका प्रभाव उसके बॉडी में किस लेवल पे, कौन से एंजाइम को लेकर चल रहा है, या कौन सा प्रोटीन ब्रेक कर रहा है, वो सब उनको कैलकुलेशन, लेट देम डू के हाउ डज इट वर्क अपॉन। तो हमें तो वो सिद्धांत को अगर वो समझ सकेंगे, तब हमारा पंच जो आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक साइंस है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 रहेगा। और हर चीज, एवरीथिंग, चाहे आप मॉक्सिसिलिन कैप्सूल दे रहे हो, चाहे आप सिफ्लेक्सिन कैप्सूल दे रहे हो, अगर हम उसको भी हम उसमें करें, हमारे दिग्गजगण बैठे हैं, अगर हम उसको भी उसमें ये लेकर चले कि भी इसका भी तो वीर्य उष्ण है, इसका भी कटु विपाक है, क्या विपाक है, तो हम उसको उस वे से भी लेकर चल सकते हैं। उस वजह से वो क्या उसके बीच में शरीर में जाके वो काम करेगा। जैसे एंटीबायोटिक्स है, वो एंटीपायरेटिक्स है, वो पसीना निकालते हैं, उष्ण वीर्य है, तो हमारे भी तो वसनाभ है, तो वो उसी वे से काम करता है। मतलब कि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो उसको हम उस वे से मॉड्यूल में ले सकते हैं, तो उनको उस वे से भी समझा सकते हैं। वो इसी तरह से हमारी हर्ब्स भी हैं, हमारी मेडिसिन भी, हमारे कंपाउंड भी हैं, जो कि हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लेवल से उनको समझा के उसको उस लेवल पे लेकर आए। रेस्ट, अगर सस्टेनेबल हेल्थ अप्रोच जो आयुर्वेदा की है, वो है प्रिवेंटिव अप्रोच, बैलेंस माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, टेकिंग केयर ऑफ व्हाट वी पुट इनटू आवर बॉडी। जो भी हम खाते हैं, पहनते हैं, वो सब कुछ उसका प्रभाव है। प्रभाव हमारे ऊपर है। अब प्रभाव में किसी को बोलूं तो वो बोलेंगे क्या प्रभाव है, प्रभाव को हम क्या लेकर चलते हैं। तो अब ये प्रभाव की जो डेफिनेशन और जो प्रभाव, जो पेशेंट के ऊपर जो प्रभाव है,
औषधि का या उस वातावरण का, तो ये उसको कैसे फील कराए, तो ये भी तो एक चिकित्सा प्रणाली में आता है। तो टेकिंग नेचुरल मेडिसिन टू मेंटेनिंग योर हेल्थ एंड होपफुली प्रिवेंटिव इलनेस बिफोर दे टेक शेप, ये मैं आपको सस्टेनेबिलिटी बता रहा हूँ हेल्थ की अप्रोच, इफ यू कंसिडर दिस थिंग विद आयुर्वेदा, जो कि ये आज ये मॉडर्न साइंस लेके चल रही है। और जो इसके हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं, your health is fundamentally directly related to your mental condition and toxins we put into our bodies through what we eat, drink and breathe। हमारी ब्रीथ के ऊपर कितनी अच्छी साइंस है, योगा प्राणायाम। आज मैं वो योगा को स्यूडो साइंस नहीं मानते, लेकिन आयुर्वेदा को मानते हैं, जो कि जहां से जिसकी जननी है और वो आसनों तक सीमित है। मेंटेन अ बैलेंस लाइफ, हम उसको बैलेंस लाइफ समझती हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फैमिली, फाइनेंशियल, वर्क एंड कैरियर एंड सोशल, जो कि हमारा की पूरा दिनचर्या है, जो हमारे पूरे शास्त्रोक्त है, जो चरक संहिता में और जो अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में, सब में उसमें यही दिनचर्या, सब कुछ यही दे चुका है, सब कुछ इसी को ही है। और हैव अ हेल्थी डाइट, जो कि हमारी हेल्थी डाइट है, जो होलसम फूड है। आज ये बोलते हैं होलसम फूड खाओ, सीजन फूड खाओ, इजीली डाइजेस्टेबल खाओ, अपीयरिंग इन जो कि अप्रोप्रिएट टाइम पे हो, सही टाइम पे हो, काल में हो, ऋतु पे हो, और वृद्ध आहार ना हो। वृद्ध आहार को तो चलो नहीं मानते, हम तो मानते हैं, लेकिन इतना तो हर कोई बोलता है कि भी इसके साथ इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो नहीं खाते हैं, तो हम उसको, हमारी साइंस तो पहले बोलती है दिस इज वृद्ध आहार, चाहे वो उसका जो विपाक विरुद्ध है, चाहे उसका वो रस गुण विपाक, सब कुछ विरुद्ध है, तो वो नहीं है, क्योंकि वो गर्विश की उत्पत्ति करेगा, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन है। और आज की डेट में आपको पता है कि इन्होंने कितनी तरह के फ्री रेडिकल्स और कितने रेडिकल्स निकाल दिए हैं, जो हमारी साइंस ने पहले ही बता चुकी है कि ये आमा है, जो रेडिकल्स हैं, जो ये जो गर्विश है, ये सारे टॉक्सिन्स ही हैं। और ये बोलते हैं एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक केयर ऑफ जो हमारी रॉन्ग एक्टिविटीज है वो ना करें, जो आज की डेट में हमारी रॉन्ग एक्टिविटीज हैं। स्लीप वेल, निद्रा हम मेन लेके चलते हैं। मेंटेन रेगुलर रिदम इन लाइफ, नॉर्मल सर्काडियन रिदम, यानी कि जो दिनचर्या वो मेंटेन करे, सोने के समय सोएं, जागने के समय गाएं, स्नान के समय स्नान, खाने के समय खाना, और ये सब जो प्रक्रिया, इसको हम पूरी सर्काडियन रिदम को हम फॉलो करें। दिस इज व्हाट आयुर्वेदा साइंस इज। And engage in spiritual activities, practices manifested through meditation, mind training and raising personal consciousness like yoga और ध्यान, जो हमारी साइंस बोलती है। Learn to live and laugh more, जो कि आजकल आपने देखा होगा कि भी लाफिंग वो जो हो चुके हैं आजकल, कई एक्सरसाइजेस कराते हैं, लाफिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो हमारे प्रसन्न रहना, तो हमारे उसमें लिखा ही हुआ श्लोका में कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिया, जब तक ये प्रसन्न नहीं होगी, तो आप फिजिकली जितना मर्जी सुंदर बन जाओ, जितना मर्जी अच्छे बन जाओ, तो आप सस्टेनेबल, आपकी गुड हेल्थ नहीं है। और बिल्डिंग डिसिप्लिन इन आवरसेल्व्स थ्रू माइंड ट्रेनिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस। अब नाउ यहाँ पे हमारी ब्रह्मचर्या आती है, यही ब्रह्मचर्य हमारा डिसिप्लिन देता है। और डिसिप्लिन सब के सब हमारी पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनकी जो डिसिप्लिन है, कब किसको कौन सी ज्ञान इंद्रियां का उसका अति वियोग करना, अति नहीं करना, मतलब उनको कंट्रोल रखना, ये सब हमारा ब्रह्मचर्य पालन में सारा कुछ आता है, सस्टेन करना पड़ता है हमें। और ये सब चीजें ये बोलते हैं बिल्डिंग डिसिप्लिन करो। तो अब टेक अ सिंपलर अप्रोच टू लाइफ, सिंपल लाइफ। अब वो हम सिंपल लाइफ तो चलो अब ठीक है। द रिजल्ट ऑफ दिस विल रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल एंड द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस अपॉन योर हेल्थ एंड बॉडी। ये सब करने से इन्होंने बोला कि विद द रिजल्ट ऑफ दिस विल रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल एंड द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस अपॉन योर हेल्थ एंड बॉडी, जो कि हम करते हैं। और हमारी आयुर्वेदा साइंस पूरी कंप्लीट साइंस है। एज वी नो देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, सब तरह की चिकित्सा उसमें है, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ENT, शल्य चिकित्सा, टॉक्सिकोलॉजी, रसायन चिकित्सा और वाजीकरण चिकित्सा, एफ्रोडोइजिक थेरेपीज है। तो मेरा सिर्फ यही है कि अगर डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर आलोक ने बोला कि भी अगर इसको वाकई में अगर नेशनल साइंस में अगर आयुर्वेदा साइंस को बनाया जाए, और अगर और नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम हमारी जो आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी है, जो वही इसको आयुर्वेदा के साइंस के लेवल पे लेके जाए, उसको ऑर्गेनाइज करे, तो हमारी काफी अच्छी इसके बीच में इम्प्लीमेंट्स हो सकती हैं और काफी अच्छा हम लोगों को समझा सकते हैं। इतना ही बहुत है जी, थैंक यू। हेलो Neeraj ji, thank you very much. हाँ जी, You have given us a lot of wonderful ideas. Pawan ji, please. एक्सीलेंट नीरज जी, थैंक यू वेरी मच।
मदन जी से आग्रह करूंगा, मेरे मदन जी मॉडरेटर है, मैं तो आगे गियर अप कर दिया, बाकी तो आपका है। नहीं जी पवन जी, यू आर आपकी बेटर इंजन प्लेस। हम आपकी तो सभी आपके, आप because you have very unique ideas about our unique life science. हमारी थैंक So I यू would पवन जी, थोड़ी सी एक दो शब्द अगर बोले तो आई जस्ट, उसके बाद आई वांट टू लिसन टू ऑल आवर सर पित्तम पंगु कफम पंगु जब तक वायु नहीं होगी कुछ नहीं चलेगा पवन भाई। I'm happy to be here. Thanks to Pawanji for identifying this day. Aaj ki din is a very special day, 28th of February, when C.V. Raman made his very important observation that led to a Nobel Prize. Yesterday, Alok ji ne bataya. And meri taraf se ye hai ki there are many other aspects. I have put from Sutrasthana Charak Samhita this about prana and what is prana, where does this prana reside in the body, and Sutrasthana, that Adhyaya talks about locations for prana. Kya cheez hai ye prana? So this is a very important research question. Jaise C.V. Raman ne jo, how he showed ki what is the reason why the water is blue or the sky is blue? Kyun? Where does this color come from? As fundamental as that is a question ki prana kya cheez hai? Or jaise Thakur ji ne jo bataya abhi, that we are looking for a science for sustainable health, and that sustainability is future health. And ek cheez ki health is different from healthcare, wo dusri cheez hai. How to stay healthy, what is the source of prana, etc. There is a lot of research that awaits. Shroto maya mein hi sharira. And this is a very important point. Ki the body is full of shrotas, and is there a science behind this? Kya cheez hai ye? Iski piche biology wale kehte hai ki mahashrot hai, and there are many shrotas in the body. Magar if you go to aprathyaksh, which is a domain I like very much, aprathyaksh agar us taraf jao to iski mathematics kya hai, shroton ki mathematics. And I just want, Pawanji, I just want to present one slide here. Ki kya hai shrut, where does this concept of shrota come, and at what levels can we have shrota working in the body? Here is the shrotas as understood in modern physiology. Or iski do taraf yog mein kya hai understanding. And this is very important because this cleaning of the shrota is not only in the sthula sharir, but also in the sukshma sharir. And kya hai iski piche science? And I'll quickly flick through. These two studies are very important. These are studies from India, from Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakam, Tamil Nadu. And they are using the most sensitive measurement devices to measure biomagnetic field. And the observations are very sensitive, and you can make observations of change in biomagnetic field when the eyes are open or eyes are closed. I won't go into the details, but this reference is an old reference from 2010. अगर इसकी मैथमेटिक्स अगर देखें तो हमारे साथ है एक जर्मनी से साइंटिस्ट या यूके में थे, Herbert Froelich. Froelich has given us a lot of information about the physics and the mathematics behind this. Ye dekho, he has given an idea of a flux tube. A flux tube is basically a tube that is related, a structure that is related to movement. When I look at this figure on the left-hand side, flux tube figure, the thought that comes to me is a mahashrota. This is a shrota. Shrota ke andar there is something that is moving through the shrota. Now, is this the same principle that we can use to understand the secret of the prana? The prana secret is written in yoga. Prana secret is written in our Yoga Shastra. Prana secret is written in Sutrasthana of Charaka Samhita. And it talks about the 10 locations where prana is located. Where is the science in this? How to uncover this science?
and how can it be used for understanding health, how can it be used for understanding disease, and Jaise Thakurji ne bataya, sustainable health. Bishnupriya ji will talk to us about many things about Swasthavrit and Vyadhi Kshamatva and many other things like this. These are all the fundamental processes and needs for the future. Iske piche bahut science pada, aur wo science is in the Sthula Sharir, it is also in the Sukshma, and we have to uncover this. And I feel if our young students can be directed in this way, then we can bring all the disciplines together. We can bring yoga, we can bring modern science, we can bring Ayurveda, we can bring Siddha, we can bring Unani. Everybody can be brought together into these big questions, and it will be very important things for the future. Pawanji, I should stop here, but because I want keen to listen to all the other speakers. Alok ji has started very nicely. Thakur ji has given us some very, very important things. Thakur ji, thank you so much. Alok ji, thank you so much. And I wait to hear from everybody else. Thank you. So now I would like to request Professor Bishnupriya Deji. Bishnupriya ji needs no introduction, I hope, on this platform. From Goa, Professor and Head SHIRODA Ayurvedic College, Gomantak Ayurved College, SHIRODA, Goa. Welcome, madam. Welcome. Stage is yours. आज स्पीकर थोड़े ज्यादा हैं, तो बस सबसे 20-25 मिनट की आशा रखता हूं आप लोगों से। शेयर कीजिए, काइंडली शेयर कीजिए। आपका हो रहा था शेयर बीच में। Sir, my slides are ready, sir? Yes. ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्त्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः. My namaste and humble pranam to all the dignitaries and best wishes for celebrating National Science Day. So each and every professional subjects has made to solve the problem or issue of individual persons or the society. So Ayurveda too has contributed, and I hope we all know it is a subject of science. But still looking to the suffering and problems around to us, there are some questions. Is this science have a sense to solve all these issues? And I hope this is the reasons why it has kept as a subject of discussing today. And so I like to share a few concepts what could be make a bridge of understandings that as just now Madan sir has tried to speak that about the concept of Srotas, about the concept of prana. It is how linked to solve those health issues, and why not Ayurveda still reaching to the first grade of treatment. So to mainstreaming the Ayurveda or making its globalized approach, we need some more focus or taking Ayurveda into the next level of its presentations. So this is my first questions to share here. That looking to this variety of statistical data, this is the data of year 2020. So it looks that India have no scientific approach. Patency numbers are very less. But does it indicates the parameter of science? We are using this haldi powder since so many years. It's our trend, it's our culture, it's our traditions. We are not actually think on that ground that we should make a patency on haldi. We should make a patency on neem because it's a part of our life. And the next issue is that we are not thinking about making or judging the Ayurveda in terms of patency itself too. And there are so many other issues.
before declaring or before thinking or before putting a question mark against Ayurveda. Is it science, or should we ready to receive Ayurveda as a science or mainstream science, medical science? Now, are we in a position to calculate all these issues with the so-called available parameters of science or so-called experimental laboratory? Now, I sometimes arise these questions that maximum 5% energy we can calculate, we can demonstrate, we can measure, we can present and exchange. Now, what about the rest of 95%? And Ayurveda is related to Ayu, life. So many such other parameters, like say, we are staying in a multi-stair buildings. Our anti-gravity or the gravity sustainable muscles like gluteal muscles, etc., they are working anti-gravity way. So is the Vyayama is applicable there? Is the Guna, Vata, Dosa like Laghu, Ruksha? We are not inputting knowingly staying in multi-stair buildings. So it is Laghu. It is going against the gravitational force. These all are again live science, but we are not oriented about it. We are not oriented presenting those things in terms of the language of the so-called acceptable science form. So as for the need of the society, as for the multiple numbers of populations or multiple population, we are getting these all food, fruit, vegetables, but has it the real test? Even though these whole populations, why the people are thinking so lonely? And that sense of test. So that sense of science need to propagate, need to unfold. Therefore, a journey is needed from the teleology, the questions of what, why, and up to the level of philosophy. Then only we can think that science is nothing but a journey from philosophy, going through the experimental laboratory and again ends at philosophy. So each and every person in their life towards the end, definitely he will be philosophers, because they don't like to get the answer of science in terms of the experimental laboratory, in terms of the so-called sophisticated scientific language. But they realized, they understood by the perception itself. Therefore, it is told that consciousness is absolute. So we have to receive those message of science written in Ayurveda in terms of our perceptions, not by the terms of the so-called science, what is more, putting a it's like a false pressures in the system, and therefore it's a questions that the season is changing, the movement of sun, moon, everything is changing. But how you are expecting that blood pressure should be fixed, sugar will be fixed? So this is an unexpected climate we are creating, and we are or instead of treating disease, we are creating diseases. Instead of giving or providing health care, we are actually providing a health care system. So therefore, why not we are passing the message? Just meet with Charak, meet with Susrat. They have not written like so. They have written Katham Sarira Dhatuna Vaisamyamna Bhavetiti. This is such nonlinear systems, the asamyata, the vaisamyata, the turbulence, itself is the sign of health. So how to which we should speak, that is science. Now that next things, instead of medications, why not we are planning to propagate the science by educating the peoples? Because maximum 15 to 20% patients should be treated under the medicines or pill or under the hospital. Rest amount of 80 to 85% should be treated by the educations, all propagating those messages from the Sangitas to the peoples and public. And therefore, we should know more about the patient, not more about the disease. Because if we will know about the patient, that if the patient can know about his body, the patient can know about the input and output to the whole physical, mental, and the spiritual or the psychological entry, then definitely they can do the treatment, not by giving the pills, by supporting, by providing the comfortness or consoling, then providing the care systems. Therefore, so many myths and facts are there against the science. By speaking science and science, you are just spreading those epidemicity in the system of health. The speaking the science, you are inventing new and new medicines, and the door is open for ADR. Is any science, in any Ayurvedic text, any Ayurvedic Sangitas has written those things of ADR, except the Vyapat Chikitsa, etc.
But inducing the medicines, we are creating cirrhosis of liver too much. We are creating the disease of cancer too much. So extreme stress in the statistics of the disease. It is actually not the real aspects of science. It is actually we are misleading the science and creating more diseases to the systems. So many such diseases related to the emotions, related to the manas vigyans. Actually, it is written in our Samhita Atma Vigyan. So it is, we are giving the pill, instead we are killing the brain cell itself, because the Atma Vigyan treatment is Dhari Atma Vigyanam. Nowhere the tablet or pills to be given to a patient of Bhaya. So I'm just leaving these questions. The whole concept of immunity is actually spoiled by the term of science, because the concept of immunity should be started from the mother's birth channels. So through which, when the baby comes out, that times the immunity starts. And in fact, the chemically, if you go to look out, the coconut juice, the coconut milk, the mother's breast milks, all have the sodium monohydrate, which is very similar to the plasma, very similar to the immunoglobulins. Therefore, why not we are spreading those messages of science behind the immunity? Similarly, we should understand the sense of science in terms of who am I. If I am a part of the atmosphere, if I am a part of this globe, all the contents in the external universe should be similar to the internal universe. That's the point. Pinda Brahmanda Nyaya, yet to be unfolded in the terms of science and to propagate. And then only we can understand the domain higher to apply those concepts. And we hardly understood the unique selling prepositions of our science. We hardly able to understand the unique selling prepositions of the different concepts of antibiotics and all written in our classics. So this same things we are taking in terms of their pills. The same things can be made by the combinations of many such medicinal plant and actively work, or very same or similar way, sometimes more to that variety of antibiotic and all it works. So this is another concept of the comorbidity, the subclinical, catching the disease at a subclinical stage. So we know that's a straightforward shloka has written under the Prameha that if the person is standing, you like to sit. If a person is sitting, like to just lay down than sleeping. So this is the way how our body become lazy, and that is the sign that in the futures the prameha vyadhi, the diabetes is coming. So just get off that time, sketch that comorbid, that biomarkers, and start to treat. So our Satkriya College is not teaching just to treat the disease at its disease conditions, but prior to its entry, prior to its manifestations, that to catch and provide the healthcare systems that times. So is it the science? Similarly, you are speaking that Montag's test is positive, but that person is not TB. You are speaking that RT-PCR is positive, but the person is not COVID-19. I will speak, you are not COVID-19, but still are you healthy? Because we have just forget to learn that virus and bacteria are actually our friend, and we should start to live with them. And that is the real message of Vyadik Shamato concept written in Charak Sanghita Sutra Stana 28. There are various ways the Roga Marga has given. Either it is from the Kosta to Saka or from the Saka to Kosta. There are 5 factors has given. Vruddhya, Visinana, Paka, Srotomuka Visana, and Bayonigraha. So 5, that is resembles to the Pancha Mahabhuta concept. So the 5 Mahabhuta are nothing but the Mahabhuta, that the Bhuta. It's not actually fearing us. That's the combinations of the way how the channels, how the ways are there in the systems, how the 5 basic elements work actively, either for the transportations or sometimes for the excretions, sometimes for the nourishment and all. Without unfolding those, we cannot claim that is this science is scientific, is this medical science, is this Ayurveda is scientific, yes or no. And Yavanta Purusamurtimanta Bhava Visesa, how many numbers of cells, how many numbers of particles, how many numbers of atoms are there in the Sarira, in the body, those all are srotas. Those all are the channels. So srotas are not any miracles. It is actually a srotas is the way, the pathway, the channels through which the things just supplied inside the systems. The things just proceed inside the systems. That's why up to this statement of Yavanta Bhava Purusa, hardly somebody can speak any word. This is the concept of srotas in our Sangitas.
And we advise the vyayama. Vyayama is just not a, it's just not a gymnastic way of using our body. The main target is that there should be swedagama, there should be swasabruddhi, and there should be a sarira laghuta, there should be an activation and fresh feelings, and that will contract each and every skeletal muscles by activating the endocrine gland, by releasing the myokines or the irisins. All anti-inflammatory agents are there. That way the metabolic system is activated and our system become very fit for the resiliency against any disease. The concept of Satmyata, it is nothing but the concept of vaccinations, what we are doing today. So that is it not science? There is instruction about the Karna Vedana Sanskara. The Karna Vedana Sanskara increases the immunoglobulins, which protect from different variety of respiratory problems and even the intellectuality too. So it is not just trained to put the ear ring, it is also a trained to maintain our immunity. So another branch of another aspects of Ayurveda itself is a customized regimen or the lifestyle systems. So which science can teach us to put the oil instead of dental caries? So dental caries, the loose tooth will be treated just by putting oil. So this is a science which teaches us Gandus and Kavala to do or to nourish the things, because we can see the pickles by treated with the oil. That oil layer protect from the bacteria, and that is the reasons why oil pulling should be. So why not we are passing this message of science from the Sanghita to the publics? Instead, we are celebrating, to claim, show the evidence. And speaking such things, actually, we are not creating evidence. We are burdening this science with the evidences. So we like to work with the work for the iron, but we should not put the evidence for burdening the subject. That's why I many times used to speak. Why not we are asking the questions against ICMR, who are compelling us to do the research under, there should be RCT protocol. These are not research. So there is a quotation, Bhagavan Vishnu. So the Jataragni is Bhagavan Vishnu. Which laboratory across the globe can make blood? So the Jataragni can make the blood. That's why the Bhagavan Vishnu. So that's not the orthodox way of asking or addressing Jataragni as a Bhagavan or Vishnu. And that's another way. The molecular death is represented by Santa Agnomriyate. So the very fastest and the correct or cunning way to introduce the medicines to the system is the Basti Chikitsa, because the villi are there, and villi are not in the upper part of the GIT. And that lower part of GIT have the villi can observe the things faster and can able to give a faster drug management to the systems. So is it not a science? And thus the Ayurveda teaches us to cook aerobic in the earthen pot. Ayurveda teaches us the patra sanskara by gold and copper or the silver. So through which the immunity maintained. So there is a Subhana Prasa Sanskara concept. There is a concept of Patra Sanskara concept through which the all minerals will be preserved instead of we are cooking under the pressure cooker. So is it not the science? And if you will not think that way, then the psychological dwarfism and the scientist concept can spoil those messages of Ayurveda, will not spread exactly to the system, exactly to the society. And there are few sloka I try to keep here. That is this, we can see here, let's say Bhagna Chikisa has written, we have to keep a swastika bandhana. The swastika bandhana still we are following nowadays in all orthopedics and surgeons. There is instructions that if we will not follow these instructions, then it can go under pakwa. So to avoid the infections to the fracture, we should follow this. So is it not the science? And there is an instructions to what should be the sadhya, what should be asadhya. So there is a categorically it is kept about the GCP instructions. Which are the patients should be taken under the sadhya, which are the patients should be kept under the asadhya categories. So why not we are refuting those things against by repeating or following the as such. And that's much essentials by putting some such variety of questionnaires
and that may be a subtlest way to bring the Samhitas or Ayurveda to the big platforms. Here it can be appreciable, and here we can helpful to many people going up to the complications of the diseases or going to the sufferings in a very young age. So there are many such way and methodology has given in Samhitas which are completely beyond to pharmaceutical indications. Dana, Swasthana, Bali, Mangala, Homa, each and every word will take 1 hour of discussions. So it's not so easy to keep all these words just to pass the message of science. This is a variety of dana. We all know. These all are the varieties of organ donations. But there are many such dana what we can do, and that is not for others but for us, and that treat our systems. That is by the process of auto healing. That is by realizing that let the other peoples to land within us, and let we to contribute the others, and understanding that each and every has made for each others. And that's the again a biggest concept of Samhita, which can bring the global peace and harmony in irrespective of the any country. And next about the drug administrations in case of emergency, there is instructions in Hikka Chikisa, Sitambu Sevaka Sahasa Trasu Bismapana Bhayams. Make a sugar and salt concentrated solutions, put as a nasal drops, it will immediately treat the Hikka Vyadhi. So now matter can be asked that which variety of Hikka it is. Collect the data. Just make a sensitizations, and then it could be again a we can go to the next level of the propagations. Similarly, in case of Swasa Chikisa, no ekantikam chikisa. So no exclusive single treatment or single therapy can treat the Swasa patient. We have to do the Byattasa Chikisa or repeated changings either in the oral medications or through the Basti Chikisa or through the Virechana Chikisa, sometimes local Snehana Chikisa or sometimes Byattasa, Fusna Sito too. So there is instructions in case of Asmari Chikisa, that is Akriyan Dhruva Murtyu Kriyayam Sangsoya Bhavet. This is an emergency condition where Abopida Kanasya Bruta has given that in case of Asmari or acute lower pelvic regions pain can be treated by the Nasya Chikisa. So route of administrations also has written in such a beautiful way. And sometimes the route of administration has also written that without going to the systemic observations. So all the Byabai and Bikasi Drabya, without escaping the routine drug entry into the systems, how it can show the action first, and then it will go for the metabolic convergence. So is it not the science? And similarly, Guna Sanskara, multiple gunas are there in our food today, and through the Sanskara, it's not for the Nidana, it will work, it also can work for the Chikisa itself. So through the in terms of the Chikisa cells, we can immunize the peoples through various way. Just we can see the military peoples are working there in the minus degree temperatures, and they just trained by the concept, like the concept of vaccination itself. And we can fix the protocols of burn case that has written. That is how the burn case to be treated by the Vyattas of Sita and Ushna. And Dagdha Brahma, how to be treated, how the application of Sneha Abhyanga, etc. And one another Vyattas Chikisa I have kept to understand easily, Sakrutusnam Sakrut Sitam. So immediately change from Sweeta to Usna, Usna to Sita. That way, how we can treat the emergency cases. And next is, if I will ask that how many rasas or tests are there, of course 6. But if I will ask how many tongue we have so many numbers. Each and every cell have the perceptions. So that all perceptions are symbolically represent as the numbers of tongue itself. So the other emergency treatment has written under the Rakta Srava. Chaturvidham Yadeta Dhirudhirasya Nivaranam, Sandhanam, Skandanam, Chaiva Pachanam, Dahanam. So Sandhan Kara, Skandan Kara, Pachan Kara, Dahan Kara. All way we can stop the bleedings. And because it is the term Sandhana, so it looks funny. So we laugh on Ayurveda. Now I will take some examples under the Charasandra Sutras on the 4th about the Mahakasaya Gana. So Mahakasaya Gana, we listen Jvarahara, we mix together all the 10 drugs. But my sincere request to all the people who are listening to me, it is not like so. Some are Pitta Samana, some are Amapachaka, some are Bisamajoragna Drabya. So it is not all the 10 drugs should be mixed together because coming under one group. But we should see about their
Rasa Panchaka, and we should think about the efficacy and the respective dosas. That's the right way to implement the Ayurveda and to present Ayurveda as a scientific under the scientific platforms. Now, I told about the Sita and Ushna Guna Chikitsa. You can see in case of COVID-19 patients, that is in the secondary infections. So it is under the principles of Jora Santapa Rakta Pitta Mudiriyate. So the alkaline phosphates and the 4A type of these enzymes has a zinc cofactors. The enzyme also functions with magnesiums and copper, whereas cobalt, manganese, nickel, and zinc inhibits the enzyme activity to various degrees. So this is a well-organized sectors under the marine biology. We can uplift those things, and we can take Ayurveda up to that level of scientific backgrounds. Now, one principles I have taken here to convince so many ways. There how one principle itself can be understood under the many numbers of scientific methodology. Now, Raptam Skandhayate Himam. By applying the hema or cold, we can do the skandana to the rakta. So this could be a hema dravya. It can do the rakta stambhana because it is a rakta and pitta samaka dravya under the nervous systems. Now I will take another terms, rakta skandhayate hemam. Now this is the gairika. So gairika is raktam skandhayate hemam, but another rakta vasrutas. So the mode of efficacy of the dravya, even the raktam skandhayate hemam, but many different way. Now, if a person is having menorrhagia or heavy bleedings, Raktam Skandhayate Hema, the also will be the drug of choice. Raktam Skandhayate Hema. If it's a Nasa Strava, Nasagata Rakta Strava, then Durvasaurus will be the Raktam Skandhayate Hema. And all the regions I have kept aside. So later on we can, anybody can refer. Now, if we're thinking about Dhanava Srotas, Raktam Skandhayate Hema will be Dhanyaka. So the coriander will be the drug of choice. If the Raktam Skandhayate Hema, there is a bleeding, or the bleeding like symptoms, like pitta symptoms are there, then we can think to apply the dhanyaka itself. Raktam Skandhayate Hema, even the Rakta Pachaka Dravya, or simple by doing Nirvata Sveda, we can able to treat such cases. And Raktam Skandhayate Hema, that is through how the Somya way we can think about the Raktam Skandhayate Hema just by applying the breast milk as an eye drop. So bleeding or the dava symptoms of eye can be easily treated. Raktam Skandhayate Hema, we all know that is hema and give a cooling effects, not to the GIT, even we feel cool, we feel good. And Raktam Skandhayate, when the intercranial hemorrhage is there, we can see the morphological structure of Naga Kesara. So the Kesara is hidden within the petals of the flowers. Similarly, if a hidden brain blood bleeding is going on and the BP is increasing and patient is going under the blood pressure, etc., then we can think about the Raktam Skandhayate Hema, the Naga Kesara is there. And that's the way how Ayurveda is, how Ayurveda was, and how it is expected to progress. So another way I like to introduce the Ayurveda, that it is a science kept under the coverings of traditions, not just for it is unscientific. It has kept because easily each and every group of peoples can use. That's why it has told. What is Udaharana? Murkha vidusam buddhi samyam yoharanam varnayati. So Udaharana. So that is the Udaharana. That is the examples where Murkha, Vidusa, intellectuals or non-intellectuals, common man can easily understood. That's why it is kept under the covering of traditions. That doesn't mean that it has no scientific background to speak. It has no scientific background for the implementations. So Bahir Antascha Bhutanam Charam Evacha. You are speaking each and every particles of the atoms. They are the Charam, they are the Acharams, they are Bahi, they are Antah too. So matter what we are observing is not made out of the matter. Just please break those Einsteinian theory. Please understand these concepts of Advaita Vada, that matter has not made out the matters. It is the energy coming through the matters, presented through the matters, executed through the matters, again ending at the energy itself. So it is the matter still to understand. And why we are claiming Ayurveda, it is why you are thinking that is the modern science. Please try to understand the all Western things are not modern. There is a big differentiation in between the modern and Westerns. Try to understand and don't use the modern and Westerns as a synonymous words. Break those all Eurocentric concepts of science. Uplift those concepts of Ayurveda. They will come, each and every person will accept it, will understand it. We don't need science, we need health. We don't need English. We try to understand
the emotions behind the things. So once upon a time, there is no language. It is the emotions to pass without the language too. So leveraging the science to increase the human value instead of aspirin, why not we are thinking, making a combination of the three things we can see here. It has executed through the image. It's easily understood. Why not we are thinking how we can get the successful agings, even though time will pass, will become old, but our all thought, sir repeatedly used to speak, "Main rahu ya na rahu." Please, sir, don't speak like so. Each and every word, whatever utterings, that effect on you itself. So any wrong or good words that actually for us. So it creates such vibrations around you. Always speak good things. Always speak positive things, because that is impacted to our health. That is impacted to our emotion, our psychology. And the biggest concept I always used to speak, the concept of Saha Paramada written in the Sutras on 16. So it is actually nothing but the concept of quantum healings, that our body is sufficient to heal any disease. So tum mujhe bhook do, main tumhe arogya dunga. It is a time now to educate each and every people's. Try to learn, try to bear the bhook, try to bear the hunger, because it will use the different variety of comorbid factors present in the systems, and that's the way we can make our systems resilient against the disease. Then we will not hate the disease, we will love the disease, and to maintain the seesaw of life. And therefore, another biggest concepts also yet to comes, that the quantum solutions of every health problems or every problem across the globes, because the whole globe is interconnected through different levels of Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manamaya Kosha. Sitting here in India, we can connect to any persons across the globe, and we can exchange the knowledge. We can understand their problems. We can not only exchange, we can uplift or upgrade the knowledge. We can transfer our prana to the other persons. What is actually experimented, and many people are crazy about learning and doing experimentation on it. And this is another slide I always like, that if anybody still not understanding the Ayurveda is a science, Ayurveda is a live things, Ayurveda is actually supportive to all each and every need of human life, then definitely those organizations should celebrate the mock test of death at least once in every month, because it can teach us many tasks what the textbook never teach, what the laboratory unable to teach. Therefore, exploring science, take into 3 levels, make a freedom movements like movements to the science of Ayurveda. Try to leverage the science and technology as a part of our nation buildings. And then definitely the globe will attract to our country for its innovations, for converting such all knowledges from from Ayurveda, or it could not be just property of our country. At last, I like to share one concept, that if I'll ask a questions, what is cheese? So it has some quality, it has some shape and size, it has some solubility, it has some smell, it has some structures. Irrespective of all these identity of the cheese, if I'll ask to a chemist persons, he will speak, cheese is nothing but a flow of different electricity or the electrons. If I'll ask these questions to a Ayurved people, cheese, don't take, this can create a viruddhar and all. So is these qualities are in the cheese? And without our brain, can we understand the existence of cheese itself? So it is just different opinions respective to the different observers, and whosoever put these questions to know what is a cheese is, and without a process of investigating what cheese are, all illusions. So now Ayurveda become illusions against such curiosity, and therefore it is the views are important. And all views are necessary for the progressive development of human civilizations and progressive development of Ayurveda itself. So think like a doctor, because when we'll think like a doctor, then we can protect ourselves from the disease, and work like a custodians, because without that thought of custodians, we cannot work for some things, anything. Ayurveda is the next one. By scaling and upscaling the Ayurveda, that will be the real scientific approach
to this National Science Day. And science is beginning to confirm what we have intuitively known all along. We are greater than what we have been told. Therefore, glorify what you are. Glorify Ayurveda, what it is, and expand what is within us. So be kind to yourselves and think like a doctor's think should be. And this should be the my simple and short message to the sense of science will definitely established. Thank you to all of you for your kind listening. Thank you very much, madam. Madan sir. Bishnupriya ji, thank you so much. You go at such lightning speed, and I'm just saying, I'm working at आपने इतनी तीव्र गति से जाते हो जी कि हमारी तरफ से ये मन में ये आ रहा कि पूरा PhD का क्लास चल रहा है, PhD level class कि बच्चे, you have to be with you. So I am deeply appreciating, you have touched on many aspects जी. Number one, आपने जो, I want to put one or two examples. मायोकाइन के बारे में जो आपने बताया, I have put one reference to व्यायाम क्या चीज है. It is a very important thing. It is understood in Ayurveda. I have put a reference there, skeletal muscle or immune system की बीच में क्या है संबंध. Or Ayurveda में it is understood there, but the research is just starting. So there is a gap, there is a difficulty कि हमारी तरफ से वो जो the interaction that should happen between Ayurveda, Samhita wale, and the National Institute of Immunology, DBT ki research wale, it is not happening. And I think Alok ji has pointed that out very nicely today, ki there is a need to make this dialogue. But we shouldn't confuse our modern scientists. They don't know Sanskritam. If you ask them about Samhita, they don't even know what is Samhita. They don't understand what are we talking about. And we have all these institutes, but then I don't understand what they are doing. They could do so much more. Delhi mein National Institute of Immunology hai ji. अगर वहां जाके अगर आप बताएं उनको कि रसधातु की क्षय उसकी लक्षणें क्या है, they have no understanding. They think you are talking some strange language. Your point is very simple. Just measure myokine levels in Rasadhatu and it can be a good marker. And there is already evidence. So I'm going to put this in the public domain क्योंकि senior लोग हैं हमारे साथ, अग्निहोत्री जी वगैरह है हमारे साथ, और हमारे साथ है जी from National Institute of Unani from Bangalore. My question is very simple. कि where is it that we can make this dialogue? अब हमारे साथ थे गुप्ता जी पिछले हफ्ते. Gupta ji's question is the concept of Shrota. You have given us so many concepts, Shrota. The concept of Shrota has become a universal concept. Whether we take Siddha medicine, whether we take yoga, whether we take Unani or whatever, whether we take Chinese medicine, I think the concept of Shrotas is such a superior concept. It has to be accepted by all the other disciplines. We cannot shake that concept. So there are principles, deep principles, Agni principle, I don't know, shayad we will have a discussion later from Gulamuddin ji here, who is here with us, Sophie ji here, on elaborating ki how can we bring the concept of Agni with some concepts that is at an elevated level in Unani systems. From the Siddha side, we can ask the same question. क्या है अग्नि से उस तरफ कुछ है सोच आपकी सिद्धांतों में? सिद्ध वालों से पूछें, होमियो वालों से पूछें कि अग्नि की उस तरफ पार, अग्नि के पार आपके पास कुछ है सोच. Is there some system, some philosophy that is richer than Agni, richer than Shrota, so that we can bring all this together and take it to National Institute of Immunology, National Cell Science Center, Pune mein, or to the All India Institutes
that are growing in different places in the country. There is an opportunity here for making some very innovative work for the future. So I will stop here. I have much more to say, Bishnupriya ji. So thank you so much for taking us into so many details. I didn't know you were going to talk about Shrotas. I have given you the work of Mahashrota and the flux tube की mathematics क्या है इसके पीछे. अब Indian Institute Science Bangalore वाले उनको पकड़े इसके अंदर, bring them inside कि सोचो इसके ऊपर कि आपके mathematics लगाओ, physics लगाओ, अब बताओ कि हमारी शरीर में कहाँ, what is the measurable Shrotas, what is Agni change, when we do Vyayama, how does the energetics change? So these are good questions. I will leave it here because we have a few more people to present, and then I come back to these points. Thank you. Pawanji, Shahid, our next speaker is here already with us. Yes. Shilpa ji is here already. Now I would like to invite. Namaskar. She is also very famous for giving lectures continuously. Dr. Shilpa Yerme. Dr. Shilpa Yerme is professor in HOD Kriya Sharir Department, SGR Ayurved College, Solapur. Welcome, madam. Welcome. Yes, sir. Thank you very Welcome on much. the platform. Yes. Please consider this Namaskar. platform as yours. Namaskar, sir. Yeah, definitely, sir. We are looking forward to your presentation. Yes, we sir. have heard one term, sustainable health. We want to see your opinions. Welcome to the platform. I hope you will continue to stay with our platform, Ji. Yeah, definitely, sir. Definitely. Thank you very much. Very good evening to all. My name is Dr. Shilpa Yerme Patil. I'm working in the Department of Physiology, Kriya Sharir, since 16 years in Seth Govindji Ayurved College, Solapur, Maharashtra. And many respected faculties are here. सभी बहुत ही बड़े और गुरुतुल्य यहाँ पर उपस्थित है. मैं बहुत छोटी ही उनके सामने, but I'm just trying to put my few thoughts on an occasion of this National Science Day 2022, and this year's theme is Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future. I think Ayurveda is having a great power. और वैसे भी हम लोग जब अष्टांग आयुर्वेद की बात करते हैं तो मुझे लगता है अष्टांग आयुर्वेद में ही सब कुछ आ जाता है. When we think about the 8 branches of our science, and today's topic Dr. Sir is given to us is uniqueness as a life science. I think already Ayurveda is a unique science. There is no such science in this. यहाँ पृथ्वी तल पर कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो आयुर्वेद की बराबरी कर सकता है. आयुर्वेद के अपने बहुत ही ऐसे बल स्थान है, जो अपने पावर्स है, जिनके बारे में आप सभी ने बहुत अच्छी विस्तारित रूप से जानकारी दी है. बट स्टिल सम पॉइंट्स आर देयर. डॉक्टर बिष्णुप्रिया जी ने भी बहुत सारे पॉइंट्स, वी आर वेरी मच क्लोज टू, शी इज वेरी मच क्लोज टू माय प्रेजेंटेशन आल्सो. So Ashtanga Ayurved, the Balasthan, our Balasthanas are like Panchakarma. Our Chikitsa Paddhati is very unique, Shodhan, Shaman, and all the procedures we adapt here, starting from Deepan, Pachan, जो भी हम लोग करते हैं तो मुझे लगता है ये uniqueness ही है. No other science like सिद्ध है, यूनानी है, होम्योपैथी है, इसमें कोई भी ऐसा विचार नहीं है जो आप अभी सभी डिस्कस कर रहे थे. स्रोतस के बारे में तो हम लोग 1 घंटा बोल सकते हैं, 2 घंटे बोल सकते हैं. एंड वी आर हियर. हम लोग ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से लगातार. ये कॉन्फ्रेंसेस आई थिंक इट इज अ पार्ट, इट इज द इनोवेशन ऑफ आयुर्वेदा. तद्वित संभाषा के रूप में हमारे आचार्यों ने इसको विकसित किया है, और फिर जाकर पूरे भारत में या पूरे मतलब पूरे हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड इसका प्रचार प्रसार जो भी हुआ है, इट इज फ्रॉम आयुर्वेदा ओनली. तो मुझे लगता है कि हम लोग कई सालों से यही बातें करते हैं कि आयुर्वेद को कुछ प्रूव करने की जरूरत है क्या, या इज देयर एनी एविडेंसेस और ऑल सच थिंग्स आर देयर. बट आई थिंक दिस कोरोना पैंडेमिक पीरियड हमें बहुत अच्छे से मिला है, और हमने अपने आप को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया है. हमारी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ जैसे शोधन, और यहाँ पे षोडश संस्कार की बात आती है, कोई भी ऐसा साइंस नहीं है कि जो गर्भाधान से लेकर, और आप सभी जानते हैं, आप सभी ने चरक का शारी स्थान पढ़ा है, चरक का चिकित्सा स्थान पढ़ा है, और इस
सभी में जिस प्रकार से भी गर्भाधान प्रक्रिया के बारे में या आत्मा के प्रवेश में बारे में जो भी वर्णन आया है, ये आज एक बहुत सारे लोग गर्भ संस्कार की मतलब धरोहर की या गर्भ संस्कार के बारे में सारे बहुत ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, इसको बहुत ज्यादा फॉलो भी किया जा रहा है। एक धार्मिक लेवल पर या श्रद्धा की भावना से भी इसको देखा जाता है, बट उसके पीछे भी एक साइंस है, जो भी गर्भ का संवाद है, माता का संवाद है, माता की भावनाओं का गर्भ के ऊपर जो भी परिणाम होता है, ब्रेन डेवलपमेंट, कितने सारे रिसर्चेस इसके ऊपर हुए हैं, आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो षोडश संस्कार की बात हमें भूलना नहीं चाहिए, ये हमें मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक जिस प्रकार से भी हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहूंगी, जैसे गर्भ संस्कार की बात हो रही तो कुसंवन या सुप्रजा निर्माण, आई डोंट थिंक कि जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है वहां पर केवल गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टिक यही दो मतलब जो भी उन्होंने डिवाइडेशन किया है या जो भी उनका सब्जेक्ट है, वहां पर कहीं भी इस प्रकार से देयर इज लाइक कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान ये विटामिन खाइए, ये आयरन पील्स लीजिए, फॉलिक एसिड इज नेसेसरी फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस, ऑल सच थिंग्स आर देयर। बट सुप्रजा और सुप्रजा निर्माण में ही मुझे लगता है हमारे देश का भविष्य छिपा है, और हमारे भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का भविष्य अगर है तो हमारी युवा पीढ़ी में है। और ये युवा पीढ़ी में हमें कौन से संस्कार डालने चाहिए, इसका निर्माण कैसे हो हमारे देश के लिए, हमारे आगे के जनरेशन के लिए, साइंस के डेवलपमेंट के लिए, किस प्रकार की हमारी प्रोजेनी हो, इसके बारे में केवल और केवल आयुर्वेद शास्त्र में बताया है। एज डिवीजन लाइक बाल्यावस्था, तरुण वयावस्था और वृद्धावस्था। आई थिंक एजिंग ग्रेसफुली, व्हाट आर द चेंजेस, एजिंग इज द like it is the degenerative changes जो पित्त दोष की गुणों के कारण होता है। Aging is the normal process, but still there are doshas. Just I am from क्रिया शारीर, मैं वहाँ मतलब ज्यादा मेरा एरिया है तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और ज्यादा बोलूंगी। लाइक कि एज डिवीजन में जो एक डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं उसमें जो भी कारण है वो पित्त और पित्त ही, इसीलिए वी सी दैट कि पित्त प्रकृति पीपल में ज्यादा से ज्यादा अर्ली एजिंग होती है, 40 की उम्र में वो 60 के दिखने लगते हैं। जात मात्र परिचर्या एक अलग अपना इसका महत्व है, सूती का परिचर्या का, जात मात्र परिचर्या का। या मुझे लगता है कि बच्चों को जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो हम लोग जिस तरह से उसका पालन पोषण करते हैं, जब हम आयुर्वेद में नहीं थे तब हम उन दिनों को याद करते, तो मुझे बहुत कोरिलेट होता है हमेशा से कि जो भी हमारे ऊपर भी संस्कार हुए हैं, या हमने जब हमारे भाई बहनों को देखा है किस प्रकार से उनको मसाज किया जाता था या जो भी क्रियाएं वहां पर चलती थी, तो इन सब का जब हम आयुर्वेद में आए तो हमें पता चला कि इन सबका जो विस्तारित रूप से वर्णन है आयुर्वेद में किया है। और सच में बहुत ही आयुर्वेद, आई थिंक कि अभी भी हमारे भारत देश के कई गाँव में रोज वात पित्त और कफ का नाम लिया ही जाता है। लाइक मुझे कोई बोलता है कि आज मेरे पेट में वात के जैसे लग रहा है, हर रोज सैकड़ों लोग बोलते हैं मेरा पित्त बढ़ गया है, हर रोज सैकड़ों लोग बोलते हैं कि मेरे गले में खराश है, शायद मुझे कफ बढ़ा है। क्यों? वात पित्त कफ को हमने तो कहीं, सब लोगों ने तो आयुर्वेद पढ़ा नहीं है, फिर उनके दिमाग में कैसे आया वात पित्त कफ, कहाँ से ये शब्द आए? तो मुझे लगता है इसी से ये साबित होता है कि हमारा शास्त्र, साइंस ये बहुत कितना पुराना है, हमें उसको बार बार प्रस्तावित करने की और ज्यादा जरूरत नहीं है। और एक उदाहरण देना चाहूंगी, हमारे सर जी है, पवन सर जी है, जो इस फार्मास्यूटिकल फील्ड से भी है। तो जैसे ल्यू 52 की बात करते हैं तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है जो 1 मिनट में कितनी मात्रा में मतलब बेचा जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दुनिया के सारे डॉक्टर्स, जो भी जॉन्डिस का पेशेंट आता है, बिलिरुबिन लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको केवल और केवल ल्यू 52 ही दिखता है। क्यों? फिर आप ल्यू 52 यूज करते हो, आप लैक्टोजन के लिए शतावरी ग्रैन्यूल्स यूज करते हो, फिर आयुर्वेद को आप क्यों बार बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं और आयुर्वेद को क्यों बार बार आप शब्द लगाते हैं? ऐसा मुझे बार बार हमेशा से लगता है कि क्यों ऐसा। एंड आई थिंक जस्ट मैंने थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, देयर आर एंड सो ऑन मेनी मोर पॉइंट्स आर देयर टू डिस्कस or to elaborate Ayurveda as a science on this occasion. So I think there is a great science behind गर्भ संस्कार। और गर्भ संस्कार के ऊपर तो हम लोग 6 महीने भी बोल सकते हैं। एक एक हमने चरक के शारीर स्थान का अगर एक एक श्लोक भी पढ़ा तो एक दिन हमारा निकल जाएगा, इतना इसके पीछे राज है। There are 16 संस्कार राज। I think मनुष्य जो भी है
जो भी साइंस का है, जो भी शास्त्र का है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, इस सभी मनुष्यों को, सभी मनुष्य जीवों को, प्राणियों को गर्भाधान से लेकर पूरा जो अंत्येष्टि का जो मतलब ये है संस्कार बताया है, ये केवल आयुर्वेद में है। और कहा सभी जो भी गांव के लोग हैं, इन सबको फॉलो करते हैं, तो फिर कहाँ से ये ज्ञान उनको मिला? हमने तो सबको आयुर्वेद सिखाया नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा से, जब भी हम लोग करिकुलर डिजाइन के बारे में या इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलते हैं, तो हमेशा शुरू से कई सालों से हम लोग लगातार मैं बोलती रहती हूँ कि आयुर्वेद को बचपन से या स्कूल लाइफ में या स्कूल सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए। तो जाकर आज जो हमारे शास्त्र के ऊपर सारे सवाल खड़े होते हैं बार बार, तो वो खड़े नहीं होंगे। और जो भी हमारी दिनचर्या है, वो सीजनल रेजिमेंट है, डाइट है, इन सबको अगर हम बचपन से ही बच्चों में ये संस्कार सारे ढाल देते हैं, तो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो भी हमारा साध्य होगा। और आगे हमें बार बार इस प्रकार से एक प्रकार से जो भी हमारे ऊपर कुछ शस्त्रक्रिया को लेकर, कुछ सम्मोहन को लेकर, एनेस्थेशिया नहीं है। मेरे एक गायनेकोलॉजिस्ट दोस्त ने पूछा कि जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं या लेबर पेन मतलब लेबर के लिए हमें इंड्यूस करना पड़ता है, तो आपके पास कौन सा ड्रग है? आप पिटोसिन क्यों लगाते हो? आप अपना कोई ड्रग क्यों नहीं देते? आईवी क्यों नहीं लगाते कि पेशेंट को कि आप इतने आयुर्वेद के गुणगान गाते हो? तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। बट आई थिंक देर आर मेनी, जैसे अंजना मैडम है, देर आर मेनी गायनेकोलॉजिस्ट जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, या इसके बारे में हमें कुछ सोचना भी चाहिए। जब स्वास्थ्य की बात हमने थोड़ी कर ली, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो आई थिंक कि जब ये साइंस की बात चल रही है, तो प्रिपरेशंस फ्रॉम अवर ग्रंथास लाइक च्यवनप्राश के ऊपर कितनी सारी मोनोग्राफ्स अवेलेबल है। इट इज अ प्रूवन मेडिसिन, नॉट ओनली अ मेडिसिन बट इज इट अ ग्रेट रसायना। और सभी लोग बड़े चाव से च्यवनप्राश का सेवन करते हैं। सभी दुनिया हमारे आयुर्वेद का सब कुछ चुरा लेती है। आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर आयुर्वेद से क्षेत्र से दूसरे जो भी सारे लोग हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि मैंने इतने सुंदर वीडियो आज तक कभी बनाई नहीं, जो कि इंजीनियर लोग एक यूट्यूब पे जो मैंने देखा है, तो इतने सारे मिलियंस की व्यूज है उनके। वो केवल अष्टांग हृदय के सेशंस देखिए उनका। मुझे हमेशा से ये लगता है कि हमें अपने आप को और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की जरूरत है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी से ही मिले हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी एरियाज वी हैव टू डेवलप। हम लोग कर भी रहे हैं। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमारे पास, जैसे मैम ने भी बताया, कुछ अंजन, अश्चोतन, जो तर्पण, फूटपाक, उद्वर्तन वगैरह वगैरह, ये सारे देर आर टोटल 30 प्रोसीजर्स कम से कम होंगे या उससे कहीं ज्यादा भी है। हमारे पास कुछ बड़े संस्थाएं हैं या regulatory bodies है who look after all such things like ICMR is there, CSIR is there, Ayush is there, and so many monograms for many of herbal drugs are there and they are developed. PubMed is there, I think Medline is there. There are so many research sources, journals, online sources बहुत सारे हैं जो कि हमारे authentication को, relevance को, with the effect of drugs या modules को प्रूव करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा से जो हमारा एक एविडेंस बेस्ड साइंस है क्या। नाउ कमिंग विद द इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रकृति। आई थिंक दिस इमेजेस, प्रकृति शुक्र शोणित संयोगे तुकुली तुक्षिगते गर्भसंज्ञा लभते तम चेतनावस्थितम वायु विभजति तेजः एवं पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति। प्रकृति नाम जन्म मरणांतराल काल भाविनी गर्भावक्रांति समये निर्विकारिणी दोष स्थिति। और मुझे लगता है आज सबसे बड़ी जरूरत है, अभी जो नया हमारा सर्कुलर आया है, इसमें हमारे विषय में प्रकृति को एक बड़ा इंपॉर्टेंस मिला है, जो कि पहले मिलना चाहिए था। और अगर प्रकृति की बात करते तो हम सभी यहाँ पर जो भी जुड़े हुए लोग हैं, हम सब एक दूसरे से अलग है। हम बोलते हैं कि हम अलग है, बट इस अलगपन के पीछे क्या राज, क्या थ्योरी है, क्या सिद्धांत है, क्या साइंस है? ये साइंस है दोषों का। दोष के अधिक किसे दोषानुशयिता मेषम देह प्रकृति उच्यते। और दोष के अधिक, देखिए हर चेहरा अलग है। किसी के बाल मोटे हैं, किसी के बाल पतले हैं, किसी का चेहरा मोटा है, किसी का चेहरा पतला है, किसी की आंखें अच्छी है, सुंदर है, किसी का रंग गोला है, किसी का सांवला है, तो किसी के दांत एकदम बड़े प्रसन्न है, किसी के चेहरे से हमें पता चलता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब तो हमारे दोष धातुमल है। मुझे लगता है कि हमेशा जब भी मैं प्रकृति पढ़ाती हूँ तो बहुत ही एक इंस्पिरेशन मिलता है। जो आज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात चल रही है, कस्टमाइज्ड डाइट, कस्टमाइज्ड मेडिसिन, कस्टमाइज्ड क्लोथ्स, कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज, व्हाई नॉट? हम क्यों फैशन के साथ नहीं चलेंगे? हमें फैशन के साथ भी चलना है। मैं जब प्रकृति के सारे सेशंस लेती हूँ तो
मैंने कितने सारे चीजों को उसमें जोड़ा है। सेक्स अकॉर्डिंग टू दोषा, वैवाहिक जीवन का हमारी दोष प्रकृति के साथ संबंध है क्या? क्या अभी कभी आपने सोचा है? कोई सोचता भी नहीं होगा या किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम अपने दोष प्रकृति को कितने लेवल तक ले जा सकते हैं, एंड वी कैन गिव अ बेटर लाइफ with this customized type of modalities, all type of modalities, not only about diet. यहाँ पे मैंने एक कैट की इमेज ली है, मांजार। तो मांजार या मांजार, जिसको आयुर्वेद में आयुर्वेद का एक मतलब बड़ा ही कोरिले ये है कि लाइक हमेशा आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण को बहुत बड़ा महत्व दिया है। पदार्थ विज्ञान को हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो बड़ा ही हमें दुख होता है कि ये विषय हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें इसका रिलेवेंस पता चलता है। तो जब भी दोषों की या प्रकृति की बात चलती है या आयुर्वेद जब पढ़ते हैं तो अनुमान प्रमाण या कुछ उदाहरण के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मांजर क्या टाइज बताया, और आप सच में सोचिए कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, पित्त प्रकृति के लोगों को अगर देखते हैं तो उनकी आंखें बिल्कुल ऐसी ही है, मांजर के जैसी ही है। अलग अलग आंखों वाले ही पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। उनकी आंखें कभी काली एकदम सी बड़ी वाली मोहक नहीं होती है, छोटी तनु पिंगु नेत्र। ये मांजर को देखते हैं तो हमें पित्त प्रकृति के गुणों का एहसास होता है, तो हमें पित्त प्रकृति को समझना बहुत आसान हो जाता है। मध्यम शरीर, सुकुमार, उष्णता सहन नहीं होती है, पिंगु नेत्र, सच में शीत गुण प्रिय। मांजर जब घर में आती है तो सबसे पहले वो किचन में जाती है और उसको दूध पसंद है, शीत गुण। इससे बड़ा साइंस क्या चाहिए आपको कि एक पृथ्वी तर का प्राणी के गुण भी हमारे मनुष्य के साथ जुड़ते हैं, या इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। ये किसी साइंस ने नहीं बताया है, जो केवल आयुर्वेद की ही एक बलस्थान है। घोड़ा कितना सुंदर प्राणी है, वाजी हम इसको बोलते हैं, वाजी कर्म एक आयुर्वेद का अष्टांग आयुर्वेद में बताया साइंस है, कितना सुंदर है। जैसे हमारे कफदोष की सुंदरता है जो संयोग का कारण है, कफ प्रकृति के लोग भी ऐसे ही सुंदर और एकदम ऐसे ही ऐठबाज, ऐसे ही चलने वाले, सुंदर दिखने वाले और सबका मन मोह लेने वाले होते हैं। और इनकी मतलब जो ऐसे बोला जाता है ना कि जो ये लोग जो है कहा जहां पर भी जाते हैं मन मोह लेते हैं, इनका बोलना, इनका दिखना, इनके हालचाल, इनके हाव भाव, जो भी सभी कुछ है। तो हमें मैंने मतलब जो भी इमेजेस लिए हैं इसीलिए लिए हैं, प्रकृति से बड़ा कोई हमारे पास बलस्थान नहीं। आज के सदी में देखेंगे तो अब बाहर के देशों में जाइए, डॉक्टर मदन सर है वहां पर, तो अगर आपने बस एक प्रकृति परीक्षण के ऊपर भी काम किया तो मुझे लगता है हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हमने सबका प्रकृति परीक्षण कर केवल उसको डाइट रेजिमेन और बाकी सब कुछ भी बता दिया। मैं इसमें बहुत मतलब एक विस्तारित रूप से भी बता सकती हूँ, बट टाइम को देखती हूँ। फूड एज ए मेडिसिन, अन्नम परब्रह्म, जैसे मैडम ने भी बताया कुछ इसके पॉइंट्स। अन्न के बारे में, अन्न संस्कार के बारे में, अन्न एज ए रिचुअल, अन्न सेवन, ये एक हमारा संस्कार है। ना केवल अन्न को पेट भरने के लिए किया जाता है, बट आई थिंक अन्न का इससे ज्यादा कई हमारे मानसिक लेवल पर, जैसे हम लोग देखते हैं कि रात्रि के काल में जो भी मतलब रेप केसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, वो देखिए, वो उसके पहले की अगर हमने हिस्ट्री ली तो उस व्यक्ति ने राजसिक और तामसिक मांसाहार सेवन, मद्यपान या कुछ ना कुछ तीक्ष्ण उष्ण आहार का सेवन किया होता है। और कई जाकर ये आहार हमारे दिमागी मतलब संतुलन को, त्रिगुणों को विचलित कर देता है, और हमारे हाथों से ऐसे ही कुछ बड़े मतलब कदम उठाए जाते हैं। हमारे मन में ऐसी भावनाएं निर्माण होती है जो हमारी सात्विक विवेक बुद्धि को नष्ट कर देती है। तो इससे बड़ा और क्या हमारे पास, लाइक इतनी सारी शक्तियां हमारे पास है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं, आई थिंक देर आर 2012 से CCM ने इंट्रोड्यूस किया है जो हमारा सिलेबस है, इट इज इंटीग्रेटेड ऑलरेडी। लाइक इन द सेक्शन ए देयर इज आयुर्वेदा पार्ट। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आयुर्वेदा, और उसके ही बी सेक्शन में मॉडर्न फिजियोलॉजी इज देयर। तो ये सारा सिलेबस ऐसे ही डिजाइन हुआ है, जो मुझे लगता है आज बहुत ही बड़ा एक अप्रोच है हमारा, जो हम अपने आयुर्वेद के साथ साथ ही थोड़ा सा जहां पर भी हमें जरूरत लगती है, हम साइंस, आधुनिक साइंस के साथ भी चलते हैं। एंड आई जस्ट नाउ हैज टोल्ड दैट इट विल बी इंक्लूडेड इन द स्कूल सिलेबस। और अभी आपने एक सेशन लिया था, पाटनकर सर भी है उसमें, तो गुरु परंपरा, मुझे लगता है आज फिर से इस गुरु परंपरा की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक अच्छा गुरु आपकी जिंदगी बदल देता है, और इसको ना केवल गाँव में बट बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। जैसे हर यूनिवर्सिटी में अगर ऐसे कुछ गुरुकुल खड़े किए जाए तो इट विल बी रियली, मतलब ये धार्मिक या हमारी सात्विक वृत्ति के लिए हमारे अंदर जो आज एक इम्बैलेंस हुआ है, मानसिक तौर पर हम लोग इतने सक्षम नहीं रह रहे, टेक्नोलॉजी के चलते हो या आज की लाइफस्टाइल हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास जो डिवाइन साइंस है उसमें सबसे अहम साइंस है मर्म विज्ञान, जो
शिवा से आई हुई, उस वैसे ही विज्ञान है, नाड़ी विज्ञान, नाड़ी शास्त्र है, ज्योतिष है, ये सारे अलाइड साइंस है, ये भी हमारे बलस्थान है। योगा इज देयर, मंत्र चिकित्सा, रत्न चिकित्सा, शिवांबु चिकित्सा और न जाने कितनी चिकित्साएं हमारे इस आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैं प्रकृति की बात कर रही थी और प्रकृति के चलते, प्रकृति के साथ जैसे मैंने कई सारे चीजों को जोड़ा है, उसमें से कुछ मैंने आपको बताया है। कैन यू इमेजिन इन सम ईयर्स क्यों हम लोग कस्टमाइजर टाइप का कुछ नहीं देंगे? मुझे लगता है अगले ही साल मार्केट में वाता क्लोथ्स, पित्ता क्लोथ्स और कफा क्लोथ्स ये इंट्रोड्यूस होने ही वाले हैं। और हम लोग दुकान में जाएंगे तो वहां पे सेक्शंस होंगे, वात प्रकृति के क्लॉथ्स, पित्त प्रकृति के क्लॉथ्स एंड कफ प्रकृति के क्लॉथ्स, और वात पित्त, पित्त कफ या समदोषज के क्लॉथ्स। जब आप होटल में जाएंगे तो वेटर लाएगा मेनू कार्ड और वो बताएगा मैम आप क्या खाएंगी, आपकी तो ये प्रकृति है तो आपको ये खाना चाहिए, वो सजेस्ट करने लगेगा, तब जाकर हमारी आंखें खुलेंगी क्या? बट ऐसा नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं। मैं खुद भी प्रकृति को लेकर बहुत ही ज्यादा मैंने कुछ यहाँ अलग अलग विषयों के साथ इसको जोड़ा है, बहुत इंटरैक्टिव सेशंस भी हम लोग करते हैं। ये एप्लीकेशन मैंने डेवलप किया है। जैसे मैं बता रही थी यूट्यूब की बात, तो यूट्यूबर जो भी है वो आयुर्वेद के क्षेत्र से नहीं होते हुए भी वो इतना अच्छा बना सकते, तो हम क्यों नहीं? और अगर हम ऐसे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद जो पुरातन प्राचीन, आज भी जब मैं गूगल पे सर्च कर रही थी आज के साइंस डे के लिए, तो मुझे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिले, वहां पे लिखा था कि मतलब बाहर के देशों में यहाँ आयुर्वेद को इतना, आयुर्वेद प्रैक्टिस को ये नहीं है, मुभा नहीं है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, बट ये क्या इस स्थिति को सुधारा जा सकता है? तो मेरे कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे मैं बताऊंगी। मैं ये क्यों बता रही हूँ? ताकि टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे और आगे भी इसके साथ हमें काम करने की बहुत जरूरत है। देयर इज वन एप्लीकेशन आयुर्वेदिक प्रकृति कैलकुलेटर करके है, जो गूगल प्ले स्टोर पे है, जिसमें आप इजीली क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपकी प्रकृति को एनालिसिस कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ चीजों के साथ भी हमें चलना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने केवल इसको बनाया है ताकि स्टूडेंट्स को भी हम लोग पढ़ाते हैं तो उनके अंदर भी रुचि हो। उनको ये फर्स्ट ईयर में आते हैं तो अष्टांग संग्रह पदार्थ विज्ञान पढ़ते पढ़ते उनको लगता है हम कहाँ आ गए, तो ये उनको नहीं लगना चाहिए। उनको हमें सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हम उनके गुरु है तो हमें उनको डेवलप करने में कोई भी कसूर नहीं रखना चाहिए। प्रकृति परीक्षण का है, श्लोकों का है, एप्लीकेशन इज देयर, शारीरिक क्रिया श्लोकावली इज देयर, सो मेनी एप्लीकेशन। धातु सार, जहां जैसे प्रकृति की बात मैं बता रही थी वैसे ही धातु सार का ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है, ये हिडन कंसेप्ट है, इसको ज्यादा हम लोग बात नहीं करते क्योंकि इसके बारे में संहिता में थोड़ा कम वर्णन आया है, बट इसको भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आज हम लोग बच्चा 7वीं 8वीं में जाता है तो हम लोग बड़े करियर काउंसलिंग सेंटर में जाते हैं। अरे उसके पहले उसकी प्रकृति तो देखिए, उसका हम लोग ये एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कराते हैं कि उसकी रुचि कहाँ पर है। बट उसके साथ साथ हमें उसकी बल को, उसकी मानसिक बुद्धि को, उसके धातु सार को, उसके कौन से धातु अच्छे हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसको कौन सा सुटेबल जॉब है, उसकी कहाँ पे उसको क्या सूट करेगा। जैसे प्रकृति में भी वही आता है, धातु सार में भी अगर वो मज्जा सार है तो वो आर्ट, शिल्प, शास्त्र, कला ऐसे कुछ चीजों को अच्छे से कर पाता है। अगर वो रस सार है तो आप इसको इतना ज्यादा जोर नहीं दे पाएंगे। अगर वो अस्थि सार है तो वो आर्मी, नेवी जैसे कुछ यहाँ पे अच्छा काम कर सकता है, तो आप उसके ऊपर कुछ दिमागी काम का बोझ क्यों लगाते हो? सो देयर आर सच रिसेम्बलेंस, सब ऐसे मैजिकल कंसेप्ट्स आयुर्वेद में। धातु सार ई बुक इज देयर, अगेन प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी वन एप्लीकेशन इज देयर, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल आयुर्वेद के हिसाब से यहाँ पर एक हिंदी किताब जो है इसको भी हमने ऐप के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आई थिंक देयर आर मेनी मोर सच थिंग्स आर देयर, इंटरेस्टिंग थिंग्स आर देयर, बट एज माय टाइम इज जस्ट 20 minutes and we are already late. So thank you very much Dr. Pawan sir, Dr. Madan sir, Anjana ma'am, all the senior respected faculties जो भी यहाँ पर है। मैंने अपने विचार थोड़े से यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। Thank you very much all. Thank you, Ji. Shilpa Ji, thank you. You have touched on amazing, very interesting points. Your important thing that I found exciting, पिछले the last few 3-4 slide आपके जो उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहिए 1 minute में, थोड़ा सा कि where can we access this program and where can Google we... Play Store. Yeah, Google. I will just put the link in the chat box also. Thank you. We will keep this for the discussion. And Pawan ji will take us to our next speaker.
But Yes, please sir. stay Thank with you, us sir. because there will be many people asking questions. Shilpa Now ji. I would Yes. like to request Professor Ashutosh Kumar Pathak जी. शिल्पा जी आपने बहुत गजब किया, बहुत ही फ्लो में और बहुत ही उपयोगी. Now I would like to request Professor Ashutosh Pathak ji, Assistant Professor, Department of Rachana Sharir, Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi. I welcome Doctor. Welcome. Dr. Ashutosh Pathak ji. Thank you, sir. Welcome. Namaskar. Hello, am I audible, sir? Namaskar. We can hear you. Namaskar, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to interact such a knowledgeful audience. And since Ashutosh ji, if you can open your camera, then we will also be able to see you. Agar bandwidth ki kami ho, Yes, so please keep it. sure, sir. Sure, sir. Just hold on. Actually, I was. Very good. If there is a bandwidth problem, we understand. Otherwise, it will be lovely to see. No, thank you. Probably it might not be an issue right now, but I was just keep making up some settings. Is my slide visible? Is it? Yes, very good. Thank you. Very, very clear. Thank you. So I will be speaking about the Ayurveda unique life sciences, and since I'm a scholar of Ayurveda and I have been allotted with the topic Ayush, so I just converted it to Ayurveda. And so let's start with what is all about, what is the uniqueness. So let's talk about first life science. What is life science? When I search it out, it is a branch of science that deals with a living organism and a life process, as far as I able to search it out. And then I thought, then what is life process basically in the current scenario? So what I got, it includes organization, metabolism, responsiveness, movement, reproduction. In a higher life form, there's a growth, differentiation, respiration, and digestion and excretion. So all this function, all these life processes function together in a fine-tuned balance for the life well-being of an individual. If there is any imbalance or there is a disruption of balance, then it leads to disease or some other aspects that is not good. So what is Ayurveda? What Ayurveda has to say about the life? Let's see. Ayurveda says, "Sharir inde sattvata samyogdhari jivitam nityagan bandha." And Ayurveda Acharya has pointed out in the first chapter itself. So this all everyone knows. Satvatma shariram chatra mitratridendavad lokastishtati saimva tatasarvam pratishchitam. Means I will start with there is a sharir, there is a indriya, sattva, and atma. And the most important thing is samyog. The samyog is utmost important in both the definition, whether it is here is a yog and or there is a samyog. It's not the any particular sattva or atma, sharir, or indriya is individually is important. The samyog is of utmost important. If and it changes, the samyog changes the nature or behavior of the entity. So if we go for a reductionist approach, it will not work out in a similar way if we go for a holistic way. So to understand the basic thing, we may have a reductionist approach. Means we may divide the things and learn from basic to the organization level. But at the organization level, the behavior is quite different. As we see, the property of hydrogen or oxygen molecule is quite different from the water. It's basically the bondage or the samyog is important. That what Acharya has to say about the life processes. So life process is nothing but merely the samyog or the their bondage of the basic elements or basic entities. So the curiosity arises, what is the basic element or a basic entity that forms life? We all know there are two things, Shat Padarth, Samanyam cha Vishesham cha Gunandram Yanikaram cha.
and we can say it is the fundamental laws of creation. And there is a dravya, fundamental element of the creation or physical form, basically. Khadin Atmana Kala Drav Sangha. And again, Acharya says, Sendri Chetnam Dravyam Nirendra Mach. So, what we got that it's not the physical entity is matters. There is some metaphysical aspect that has to come into play. So, this is Ayurveda. What about this modern aspects? If we element of life, then we start getting I had searched about this, then I got electron, proton, neutron, and other quarks and anti-quarks and other aspects and basic elements is there. So what I got, this is a still a physical aspect that has been pointed out in the as a basic element in the modern sciences or in the contemporary science, but still we are lacking with the life forces, that is Atma, Indriya and Man. That is the utmost important that the contemporary science is missing. But there is a concept of mind, it has emerged, and many other aspects have emerged, but still it is in the budding stage as far as I know. So there are two approaches, systematic approach or reductionist approach. A reductionist approach focuses on an individual molecule and its properties, while a systematic approach is historically associated with the type of holism or a study of higher level organization, means that deals with the organizational functions. So the reductionist paradigm still holds a significant influence on science. Most biologists begin to interpret life as a molecular process regulated by genetic information. And so, since I am allotted with 10 minutes only or 15 minutes only, so I'm not going very deep aspects, which I still am in learning phase of these aspects. So I had a suggestion. That is a notion of complementarity, which is proposed by Bohr. We all know light has dual nature, and particle nature and wave nature. We all had studied perhaps in our 10+2. So this duality was of utmost controversy in an initial stage, and it was sorted out by basically Bohr that both has to be taken up in the account. So from learning from this example that light has a dual nature, which has been accepted by the scientists in due course. So the reductionist approach and the organizational approach, a systematic approach, has to be perceived as a complementary thing, not as a opposing aspects, and it will be sorting out the things. I have a suggestion. I have got this complementary to biology, and this is a good article I came across, and I'm not able to produce all the aspects in a short span of time. So this is a suggestion. We can go through it, and we can find that modern or Ayurveda is not a different story. It may be a different perspective to see the same thing, but we can come to a point where we can say that it has there is similarity, or the lacuna of Ayurveda that's modern and modern contemporary science lacuna can be fulfilled by the Ayurveda aspects. So this is a thing that I got. So let me put all my this statement in through an example of health. What is health and what is living thing and all in Ayurveda and in the modern science. What is health? As far as WHO, we all know physical, mental, and social well-being, and it is a fundamental right as far as WHO. Okay, so and there are different dimensions which has emerged, and there are many dimensions that can be counted off. So if we search about the living body and living thing, there has many definitions. I'm not getting in all the details, but here is the thing, you can go through it. So living body and living thing, there is a definition. Okay. And what about human body? So it is a 10 major system. It is a composition system, and this system play in a very precise, balanced manner to form a human body. So what Ayurveda has to do?
say about the health. Hita hitam sukham dukham ayuta setam manam chatarchayatokam IRESERCH. We all know that. And Prayojan, we all know it. So, what about the living body? There is a difference. The Chetana Adhishtan Bhutam. This point is quite missing in the contemporary science. What is Chetana Adhishtan Bhutam? What is Chetana in fact? And this concept can be taken and researched to get the basic thing and incorporated in the contemporary science, and it will complement the existing science. Both Acharya and Charak has, Shushruta and Charak has given importance to Chetana. So coming to Swasthya, some dosha, some agnisha, some dhatu malatriya, prasana atmindriya swasthi vidhyate. Balance anatomical physiological function, sound sense, mind and blissfulness is the Swasthya. But Acharak has a concept of Sukh. Karyapalam Sukham Vapti. Tasya Lakshanam Mano Buddhi Indriya Sharir Tushti. It's not someone's from us to some that is a different story. As far as Acharya Charak Samhita is concerned, the concept of Swasth is not precisely given. It is the concept of Sukh is there, and the Lakshana of Sukh is Mana, Buddhi, Indriya, Sharir Tushti. Blissful mind, body, and senses is called Sukh. That as far as the living person is concerned. So what I get from the Acharya Charak, that merely health isn't a subjective entity, individualized, because it encompasses both physical and mental and social aspects, and it can be partially assessed by a assessed objectively by measuring some parameters or social behaviors and other things. But holistic approach is the best way to assess, and health is for dharma, kama, moksha. So suppose we have an automobile, and there are different dimensions to it. So how to get a healthy car? There are many things that has to be learned, and it will take some dedication and some amount of time. So how one could keep one's car healthy? He has to, or she has to have a culture of health. Means she has each and every dimension in mind, and it comes through a reflex when he drives a car. And there can be many dimensions, and there may be many n number of instructions. But so how to achieve health? So as far as the individual health is concerned, Sukhayu, that is Dukhayu we call, it can be achieved by Ahar Swapna, Ahar Nidra Brahmacharya. And what it will lead to Dharma Kam. And there is senseless eating, senseless sleeping, senseless marital status is the problem. So what we should follow? Sensible eating, sensible sleeping, sensible marital status should be the answer to all our queries for individual health. But the most important is Hitayu and Ahitayu. So social health. Individual health leads to Dharmarth Kam, but moksha, it is a tough job. And the path starts from Sadvrit. And in nutshell, Acharya has told Brahmacharya Gyan Dan Maitri Karune Harsh Upshay Prashmasya Sadhiti. Means these are the part of the Sadvrit that has to be followed. And it leads to moksha, or it leads to a path of moksha, and or we can say yoga, what everyone's seeking for. So Acharya has in nutshell told about the individual health and the social health, and it also leads to realization of oneness with each and everything individual, that is Purushamam Lok Samhita. This is an important concept that is just described now. And for this, again, culture of health means we have to develop a culture of health. We can't teach each and every one with this. We have a culture to develop a culture that everyone may celebrate health and different dimension of health in a festive way. Suppose when we got Uttarayan or of Sankranti is there, we celebrate the things in a different way. When there is other Sankranti, Satwa Sankranti is in this north, it is called, we celebrate the things in a different way. So culture of health is an answer.
and merely teaching or giving drugs is not going to work. So culture has to brought, everything has to brought in the culture, and it has to be celebrated. That has been taught in our culture in ancient times, but we are forgetting it, or we are not practicing it perhaps. So what is ways to achieve? Individuals should be motivated and aware towards the duty, dharma. Seasonal regime, food habit, and living habit should be taught and motivated, or maybe people may be aware about it, which leads to earth and calm. Social regime of dan, daya, gyan, as far as Samriddhi is concerned, dharma and moksha will motivate, and social harmony will be there. And personal regime of knowing self by practicing yoga, not only by asana, leads to moksha. So in present scenario, everyone asking for immunity, but it's not a one-day process. Getting immunity is not a one-day process. It requires awareness, a sense of awareness, and this sense of awareness is possible only by spreading the awareness each and every. It's not about teaching in the classes. It has to be brought up from the childhood days. So that sort of awareness is needed in present scenario. Childhood brought up, a child should be brought up from childhood and should be aware about each and every aspect. So it will lead to a life of responsibility, wistfulness, and sensibility. So this will lead to a immune life. In summary, we can say each and every participation is a must. A sound body and a sound mind is a short but full description of a happy state. We rise by lifting others. So it's not an individual approach. It has to be a holistic approach. And that's what is yoga, union. And it has to be penetrated deeply in society. That's what I think. So it's our culture that makes us unique. And Ayurveda is unique life science. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Ji. You have given us a valuable introduction across several perspectives that have been touched on in our discussions. Sadvrit, Swasthavrit, we have touched on some of those things. And please stay with us for the discussion section, which will come on after our final contribution today. Okay, thank you. Thank you. Thank you. But don't run away. Please stay with us. Great. Pawanji. Ji, sir. Wonderful. Now I would like to invite Dr. Shameem Banu Nabeesab. Sorry, Dr. Shameem Banu Nabeesab, Consultant and Assistant Professor, Department of Panchkarma, SDM, College of Ayurveda, Hassan. Welcome, madam. Dr. Shameem. Welcome, Dr. Shameem. Good evening, everybody. My name is myself, Dr. Shameem Banu Nabeesab, Assistant Professor, Department of Panchakarma, SDM Hassan. आज हमने जो टॉपिक लिया है आयुष, why the uniqueness of Ayush is something which we know from since many years, but we are not accepting it. Many people know the importance of Ayurveda, but they are not ready to accept that we are following Ayurveda since many years. Like in Ayurveda, first we have learned about Swasthasya Swastha Rakshanam Ayursurasya Vikara Prashamanam. It is main concept of Ayurveda that first we have to restore our health by following Dinacharya, Rutacharya. In first year syllabus itself, it has told that in Ayurveda is like it is life science, which is not only for preventing the diseases, it is for the it is not only for the diseases which has already occurred, it is for the prevention of many diseases. By following Dinacharya, we can avoid many diseases. Like in present scenario, the whole world is affected by COVID-19, but by following our Anutaila Nasya in the daily Pratimarsha Nasya, we might have
own this COVID-19 in the first wave only. And we know that Ayurveda is Ayurvedo Amrutanam. Not only by reading, it acts as a Amruta. By following Ayurveda, which is like Dinacharya, Rutucharya, it is the way of life. By following these things, by Ahara, which is main importance is given in Ayurveda, by Agni, the Agni which is responsible for all the diseases. If we maintain Agni, many people are now becoming gym freak, but in Ayurveda, it is main important to maintain the Agni. We have to become Agni free so that we will not get any diseases. And Ayurvedo Amrutanam is one of the best quotes we have seen in the Ayurveda. By following those things, we can live a healthy life for many years. And we know that our Samhitas have told many Siddhantas, but we are not following those things. We are in nowadays, what is happening is all the Siddhantas are only in book. We are not following those things. If we follow those things only, then only we'll get a long life. We have a special branch called Rasayana and Vachikarana, which is, I think, no other medical science is explaining about the Rasayana, which is most important for the restoring the health as well as for the long life, which is main contribution of the Ayurveda. Not only the Rasayana, Vachikarana is the one of the main important treatment protocol in the Ayurveda. And when it comes to not only the physical body, in Ayurveda, they have explained about mental health also. Raganam Dukkha Karanam. This is most, I think, many people don't follow this one. That's why many nowadays youngsters are feeling anxiety, depression. Many Manasika Vikaras are because of, if we follow these things, that if we understand this line, only this line, like Raganam Dukkha Karanam, which is attachment is always end up into our dukkha, that is sorrowness. If we follow these things, if we know the things which are already told in Ayurveda, not only by writing the exams we'll get the marks, but it is the life science which is we have to follow so that we'll get a good life. I know many of these Samhitas have told how to live a long life, but many other sciences are still they are searching how to live a long life. We know what to follow, what not to do, which is Patya, which is Apatya in many diseases. Still we are not able to follow those things. We know that Kshira and any fruit mixture is like milkshake is Viruddhahara, but we are not having any evidences to tell. Viruddhahara is one of the important topic in Ayurveda. But still many people are doing those things. Eating many spicy food, junk foods is also apatya. Still and many people are following those things. But these only day by day, many diseases are coming and we don't have any treatment for those things. But by following Ayurveda, we can prevent those diseases. Not only the diseases prevention, but when the disease occurred in body, we can cure those things. And one of the important topic in Ayurveda is Sadhrutta. Sadhrutta Palana is the only, I think it is the great contribution from the Ayurveda to the mankind. So that it is, Sadhrutta is one of the such things which by following Sadhrutta, like Ahimsa is there, Asteya is there, we should give respect to the elders. We should not harm any animals. We should not lie anyone. We should not feel jealous about something, other things. These are the things which gives one the mental health awareness also. So now Ayurveda has not only focused on the physical things. It has told many things about mental health also. By following Ayurveda, we can have physical and mental health. Yes. So Ayurveda is one of the medicine by following which we can lead a healthy and both physical and mental life.
we know many diseases are coming day by day, but in Ayurveda it is told as rogas are asankhya. We already know that by in Jwara Chikitsa Adhyaya they have told for all the diseases, Agni, Mandagni is one main cause for the rogas. By following only by correcting our Agni, we can treat many diseases. Like having a food in the correct manner. But nowadays, what people are doing means in a day they eat 3 to 4 times. But according to Ayurveda, they have to maintain a good Agni for digestion of all the whatever the ahara we have taken. We have to take the food only during when we feel hunger. And in Ayurveda, it is specific that in Samhitas they have explained about how to drink water also, when to drink water. Like in between, if we eat, what will happen after the food? After the completion of food, if we drink the water, kapha will be increased, and the person will become saulya. So when we see the each point of Ayurveda Samhitas, they have told smallest points since birth till the death. How to get moksha also is told in Ayurveda. So it is one of the unique science which tells about not only in the present era, it will continue for the many years. In COVID times, our Ayurveda has become more popular. So it's our duty to more popularize the Ayurveda so that the health of every human body is preserved for the further. Yes, sir. Thank you for giving me such an opportunity, sir. Namaskar ji. Thank you so much for being with us today and sharing several thoughts on how to stay healthy, how to be fit, how to come up with sustainable approaches to good health for the future. So, Shameem, Banu, thank you so much. Thank you, sir. Tell us a little more about how, this is one question before we open the floor for discussion. In SDM Hassan and the nearby area, can you tell us a little more about the community engagement from the college? Because SDM is a very important institution in Karnataka. Please tell us a little more for all our audience here and people who are listening online. Just a little bit more about. Yes, sir. We are we are more focusing on the health of all the individuals. Those who come to our hospital. In Ayurveda, we have told in Panchakarma, especially my branch is Panchakarma, we have a special called Rutu Shodhana. Here we are doing a camp for Vasanta Vamana, mainly now. It will start from March 15 to May 15th. It will go on for 2 months. For whole month, we will post the Vamanas. It is for prevention of many diseases. We educate the patient about why we have to go for Rutu Shodhana. This is, I think, Vasanta Vamana is one of the best to treat many pramehas, saula and many diseases. Yes, sir. Shameem, Banu, I just want to break this here. Could you give us an idea from previous years' statistics? I think you have been doing this for many years now. Yes, give us a little information about the number of people who attend these the period that you're talking about and who come for this Vamana treatment. It's my privilege that I have done PG, my post-graduation from the same institute. So since 5 years, I am here only. And we have seen per month, at least minimum of 30 Vamanas we will conduct for all the departments. They are cooperating for all the Vamanas. We will conduct the Vamanas for a monthly 30 patients will come. For this, in Vasanta Vamana, it will go for 90 to 100 patients. Participants will be there for only for the 2 months for the Vasanta Vamana. For the a Shodhana procedure for the Madanaphala is one of the important for the procedure of Vamana.
what we do is in our department, we collect the Madana Phala in the Rutus before the Vasanta, and we'll do the Shodhana according to the Kalpasthana of Charaka Samhita. After that, we'll collect and we store for the whole year, and we use it during the whole year. And mainly in this Vasanta Vamana, there are many participants, and many people are moved nowadays, like after the COVID period, many people are interested towards taking this Rutu Shodhana. So we educate more about this one. Thank you. Thank you for stay with us. I wanted to open our floor for discussions too. Shamina, thank you so much. For me, Yes, thank you. The numbers you are given are important, and we will gather this from other people here on the panel. I know Maharashtra, they do, it is a very routine procedure in Maharashtra, and there are a lot of people who follow this. Maybe also in Goa, there is some involvement. But before we go into our discussion, I want to thank all the speakers today. We have had wonderful presentations from all the speakers today. So thank you to everybody for being with us on this very special day, the National Science Day. And Shilpa ji, in her first slide, she gave the theme for our for this year's Science Day, which is all to do with integration. And I want to use that as the start point for our discussion. While the presentations were going on, I chatted with Gulamuddin Sofi ji, who is here with us, joining from Bangalore. And I was asking Gulamuddin ji how we can enable a little more futuristic integrative approaches. And I would like to invite Gulamuddin ji to share a few thoughts. Gulamuddin ji, namaskar, please. The floor is yours. We just want a few words from you. Thank you so much for joining us from Bangalore. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you for giving me this opportunity. Basically, it will be an extempore lecture, some suggestions. Please, so please. Not be interconnected altogether. About this science, a unique science. Traditional medicine thinking it as a unique science, but basically we need to know what is the difference between science, pseudoscience, and what is the rational knowledge. That is very important. This will lead us to basically this Cohen and Popper's philosophy of science, where he says that we have to see that if a science follows the principle of falsifiability, Popper has given this, then we can categorize any knowledge as a science. And then Cohen says that it should be empirical. It should be empirical. All the concepts should be measurable. If they are measurable, then we can analyze a concept. Then only we can think a knowledge base as a science. Here in traditional medicines, we have the concepts, and when we talk of body, and we talk of various relations between the body organs and other things, there seems that there's little difference between this the science Popper and Cohen talks of and the traditional systems Ayurveda and Unani talks of. There seems very little differences. Second, if Cohen's this postulate is thought about the measurability, now we have the tools to measure prakriti or mizaj, and we have the tools to measure various concepts. Say, for example, temperament of a drug. We have evolved these concepts by taking the scientific methodology like validation of a statement and then having various items, then analyzing various items, and then standardizing a tool. Everything we have. So it seems that we are going towards scientific venture of our traditional systems. But the difference remains here. Whenever we think of this traditional system, we are never reductionistic, nor we are systematists. We don't systematize things, or we don't reduce the things, but we are holistic. There are these three differences are there. And now the new theory, philosophical theory, which has come up in 20th century or late 20th century and 21st, start of 21st century, what we call phenomenology. That phenomenology has generated that we can see the reality in patterns.
That is, if we observe things very much, and these observations can be brought together, and then we can synthesize our knowledge and bring up a new science like topology. Very good. Topology in mathematics, it is just a phenomenological base of it. Or we have ecological this phenomenology in environmental sciences. Or we can say we have the book this about Fritz of Capra, who has written about biology, about biological systems. He is talking of the phenomenological phenomenological approach to things. Our Ayurveda or our Unani medicine, we have always seen various patterns of things. Say, for example, if you want to say mizaj, we have to see it from the determinants. If a person is very active, he sleeps less, he has more appetite, he has more, he is more thirsty, we say the Agni is dominant in him, or we say the Safra is dominant in him in Unani medicine. Similarly, if a person is docile, his build is a bit fatty, and then he sleeps, his sleep is long enough, we say that he is phlegmatic, or we say that is kapha is there in his body, that is predominating. And these determinants, they have been made empirical now. But Unani does not talk of cells and molecules and enzymes and DNA and other things. By reducing the reality to these things, we say that whatever we are observing and then synthesizing them, we get to a reality. Here again, we need a philosopher in modern science where he needs to synthesize all these basic sciences, quantum physics, say biology, or say this molecular biology. He had to synthesize the things and get a reality out of it. So, Fiji, I'm going to stop you here and just I think we are hearing what you're saying. I have a little more probing question here. Your institute is based in Bangalore. Yes, Bangalore has the NCBS. Bangalore has Indian Institute of Science. Now, the question for me, based on what is happening today, C.V. Raman worked in Indian Institute of Science. Now, question for me, and from all of us gathered here, is what is the interaction, the National Institute for Unani, what interaction does it have with the Indian Institute of Science, or what interaction does it have with NCBS, or what interaction does it have with the Institute for Advanced Studies in Bangalore? Is there anything going on? Yes, sir. To date, what we do, sir, the interaction is for technological help, technical inputs. But what I feel from my side and from what I feel when we consider Unani, this technological help is not enough. Not enough. There was this, when I was discussing with the Secretary of India for this 10-year plan, he told me, what is this collaboration? And I told that the collaboration, they understand that they will give us a technical help and we will solve our problems. It is not enough. But we need a collaboration where we need to refine our concepts, keeping the soul of our concepts as such. But then how to analyze those concepts with this framework? If they can help us in them by their techniques, by their whatever they have studied, whatever the knowledge they have, by their expert advices, that will be much more better for us. Thank you, Ji. I think, Sophie Ji, you have touched the heart of the problem. I think Bishnupriya Ji raised this in her presentation. And please stay with us because we will come back to you to touch on this point. I would like to get that, just make Bishnupriya Ji just comment on this, because Bishnupriya Ji is also saying the same thing from Ayurveda side. We have to study the system in its whole. We cannot break the system open, you know. And I think this is what you're also saying. And what you're also saying is, let us come with a new philosophy that sees the patterns, topology, you said, you know, all of those aspects. I want to see if Bishnupriya Ji has some thoughts on this, because I hear the same thing from both of you people. You know, Bishnupriya Ji is presenting something, Shilpa Ji also presented something similar, echoing the same sentiments. So Bishnupriya Ji, I don't know if you would like to share a few words.
before I invite from Delhi, we have Sunanda ji. So new people in our platform. So Bishnupriya ji, the floor is yours. And Sophie ji, we'll come back to you. Just listen to what Bishnupriya ji is going to add to the line that you have opened up. Yeah, sir. For the progress, we need a open-hearted bridging. So the bridge should be for the sake of service to mankind. It is not to just satisfy the sometimes the argument. Sometimes we have to face the ego. These all just we have to keep somewhere, and we have to work. If it's possible, then definitely everything. Bishnupriya ji, thank you for. I know you are always said that you must make this relevant for the community, and I think what Sophie ji is saying is that there is a science behind this. We have to catch that science, and it is no use connecting us with Indian Institute of Science just to develop some technology. Yes, that is important also, but I think what Sophie ji is saying, let us work together to get to the deeper science behind this. There's a deep science, and once we understand the science, we get the confidence to then take it to the public. The question of evidence, this comes up again. And if you measure the evidence using modern biology descriptors, we might miss the real phenomena. I think the phenomenology that Sophie ji is mentioning, have I understood that correctly, Sophie ji? Yes, sir. Definitely, sir. But one thing is there, grafting an orange in an apple tree is impossible. Both the fruits are very important for health. And apple is also helpful and orange is also helpful. But we cannot graft the two. Thank you. What I'm saying. I think you have touched. Please stay with us. I just want to bring Shilpa ji from Shilpa ji. Would you have some comments in reply to this, what you heard from Shilpa ji? I think if Shilpa ji is not here, we have a new person here with us, Sunanda ji. Sunanda ji from Delhi. Sunanda ji, namaskar. If Sunanda ji is not here, I want to keep the floor open for a few minutes to see if we can get some more input here from people about what we have discussed today. Bishnupriya ji, would you like to make a few more comments about what you've heard from 5 of your colleagues today? And also, if I can get Dr. Professor Pathak from BHU, we would like some words from you, sir. Ashutosh ji? Sir. Yes, sir. Ashutosh ji, please tell us a little more about where we should be going. You have presented some things. Sophie ji is telling us that we need to have a slightly different approach. Bishnupriya ji also says, we have to have an approach, get the science and make it relevant for community. What do you think? Because you are in the privileged institution in Varanasi. Thank you, sir, for kind words. Obviously, the ultimate aim is the same that you were talking about, of any science or any medical science or anything, for the betterment of community or giving the services to community, or making science more understandable to the community. What I think is the most important part is the execution. How? The question is how to get that to the community, or make a science more understandable, or select a model that will be suitable to understand in all ways. But what I think, the basic thing that has been described in our science, that has to be brought up in the curriculums of the students from just from the primary classes, like Bhojan. There should be as we have a chapter of moral sciences and all things, we should have a star within research in a simplified form, introduction of Tridosh,
Swasthvrit, in a simplified form, in a step-wise manner. So it will inculcate some seed in the growing child, which make him or her more receptible or more sensitive to the environment or the thing and the concept that has been described in our science. And it has to be there. Merely making a systematic, as a reductionist approach or systematic approach or holistic approach will not be that useful as far as I think. The thing has to be brought up in the society in a stepwise manner. That has been proved. Means we know food is good. So how we eat food, the most important thing. That has to be brought up. What I see, most of patients come to me, they has a problem of gastritis. What I when I get history, they say I wake up by 8, I take up a bread or something, then I go for a blah blah thing. I eat while watching TV, and same with the child also. He or she have a tendency to eat while watching mobile or TV. And these things certainly going to affect the GI system and the other systems. And if the food is not in the proper way, other things will not be work. So we should start the simple thing from the simple thing. Maybe I may be not on the correct path, but what I feel I have communicated to you all. Thank you. Thank you, Ashutosh. What you're saying is absolutely correct. The difficulty, my understanding is the difficulty with all of this is people are expecting, I'm going to use the terrible word called evidence, What we know is there is a connection between the autonomic nervous system and, if I'm using modern terminology, autonomic nervous system and all those other body functions, And maybe people are expecting some evidence based on that. But as Alokji said in his introduction, what he said was that we need to move beyond the shlokas to something that more people will find easy to accept. The shloka concepts and the shlokas and the knowledge in the shlokas are very, very deep, And maybe we need to translate it for people. I feel there is something missing in what we are, there is something missing in our approach. Your point is well taken, that about health literacy, and you have used very nicely the concept of developing a culture of health, and rediscovering. I put a note there saying, rediscovering the traditions and the traditional fundamental aspects of health. So what you're saying is very, very interesting. Let me add one thing, sir, with your permission. Please. When I got admission in BMS way back in 2002 or something, 2003 basically, breathing from one nostril and means inhaling from one nostril and inhaling from one nostril and exhaling from other nostril. People used to ask question at that point of time: is it worth giving our effort in this thing that you say from inhaling and exhaling from the different nostril going to change the thing? You mean the students were asking this question? No, sir. It's the society person. Even society was asking the question. Okay. Even the I'm from BHU, so yeah. Even the teachers or the grown-up person has that such type of questions. How come breathing from one nose and inhaling from one nose and exhaling from other nose going to cure you, or going to be a benefit you? And here in standing in 2021, after 20 years perhaps, we know it do work, but still we are lacking some translation things. But we have a culture that we had developed, that every person is going for it, and in due course we are, since there is increasing acceptability, we are getting datas. And the evidence you are talking about, sir, it will take time and it demands data and research. Ashutosh, I'm going to just stop you there and just probe you a little more, because you've touched a very important point. Who should do this research? There is a need for some research so that people believe it more.
I'm going to say, yes, this works. I agree it works. I know where the contemporary science is. And I also know there is a lack of a dialogue, that the institutions who should be promoting this are not doing it. Okay, let's leave that aside. But who do you think, you are in BHU, who do you think must do this work? Should BHU do it? Or should All India Institute Medical Science do it? Or should some other institution, All India Institute Ayurveda or the yoga universities, who should do this work or similar work? I asked the same question to Sophie ji about the connection between Unani, National Institute of Unani in Bangalore and the other big institutions in Bangalore. So the same question to you, who should be the people who should listen to what you have just said? You have made a very important point. Who do you think should do this? Thank you, sir, for bringing up such a pertinent topic and touching such a burning topic that has, and that I think each and every person in our community has such perception or such question. Who is going to do it? So, getting a data, getting a research, getting a result is not a one-day process. You better know it. I'm quite young and I'm still in learning phase. I'm still a student, basically. So everyone is doing in putting their efforts. I'm from Rachana Sharid. I'm doing my work on Marm Science, and I do have published a first case report, perhaps in a journal that JEIM. Perhaps everyone is knowing first case report, perhaps on the Marm therapy. Yeah. And it is the Marm therapy. Everyone can get it. So I'm each and every teachers from our institute is giving their effort. Maybe it is not up to that level that it may be ringing the bell. May I shoot that word? But in due course of time, it will surely it's going to have some impact. And we are since our faculty has reached a certain number about, and we are getting resources also. So certainly, of course, we will be getting with some research. As we know, GHARS has been in the practices, and it is being used widely. So thank you, Ashutosh. I want to break you here because your point is well taken. We don't have with us today Srivatsji, who's our RAV guru on Marma Chikitsa. We will make that thing happen again. But for everybody's sake, if you can put that reference, blood pressure normalizing effect of Marma therapy, the case report, if you can put that on the chat box, or maybe I can do it. I just want to bring two other people who are here with us. Ramadas ji, who raised his hand, Ramadas ji, and follow after Ramadas. Ramadas ji, namaskar. Namaskar. Yes, sir. Yes, sir. Mine is related to Sanskrit interpretation only. Please, everybody says science, science, science. Actually, what does the science means? If you take the terminology Shastra, actually that is what is the terminology the Indians uses, or Indian darshanas uses, or Indian community uses for the science. Shishyade anena, that means through which we are instructing our disciples to understand whatever we are giving to them is generally called as Shastra. Shas Dadu. Actually, in olden days, the teacher will instruct the students to do it. So through which it is being done, that is what is Shastra. If you take Ayurveda, Ayurveda has got its own science, its own scientific approach, its own language, through which when it is being explained, every proof is there in that one. Whatever they are doing, for that everything is proved, very clearly proved. And it is very clearly told by our Vyakyanagaras, one and all clearly told. If you open Ashtanga Hridaya, whatever be the language part, that which is beautifully explained by Arunadatta, what is the clinical part, that which is very clearly by the Hemadri. I reading both, you can understand what is the depth of that sloga and what is the Shastra through which the Vagbada wanted to teach us that theory, very clearly through their language. Unfortunately, we are looking at the science through the modern scientific terminology, so we are unable to catch it. Now, sir told that he is from Rachana Sharira department. If you take Rachana Sharira, modern anatomy, it is structural anatomy we are using.
When you come to Ayurveda, it is karma pradhana anatomical points. How can we interpret that and that through this? Impossible, very difficult. So that is the reason we are getting confused. The clarity in the science is missing actually. Ramadas ji, please wait, please. I'm going to stop you here just because I want to bring one or two other people here. I want to bring Sophie ji, but before Sophie ji says it's too retrospective. Before I bring Sophie ji, I want to bring Sunanda ji from Delhi. So Ramdas ji, please wait. Your point is very important. Sunanda ji, namaskar. नमस्कार सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा नमस्कार। आप कहाँ से बोल रहे हो जी आज? दिल्ली से? जी मैं दिल्ली की हूँ, पर इस समय मैं सूरत में हूँ। शाबाश। तो ऐसा है सर कि ना सब सुना, बहुत अच्छा लगा, सभी बातें अच्छी हैं। एक तो मैं ये व्यवहार में लानी चाहिए, और अभी जो मेरे से पूर्व जो बोल रहे थे, तो सर ये बात सही है। हम जो अपने शास्त्रों में हमने पढ़ा है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है, हमें उस पर आत्मोपदेश है, वो उनको मानना चाहिए, उनको समझना चाहिए। साइंटिफिक कितना कर पाएंगे ना कर पाएंगे बात की बात है। इसको हम यदि करके चलते हैं और आज तक ये चलता आ रहा है, उसको हमने देखते भी हैं कि उन पे जब हम फॉलो करते हैं उन चीज़ों को, तो हमें फ़ायदा होता है, आराम मिलता है लाइफ पे। लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने से उसके आधार पर हम लोग उसके गुण को पाते हैं और जीवन में लाभ पाते हैं और काफ़ी आराम रहता है। लेकिन यदि उनको इस हर चीज़ को ये सोचेंगे कि साइंटिफिकली जब तक नहीं होगा तो इसको विश्वास नहीं करें, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतना सही नहीं है। कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। जैसे अब देखिए गीता में भगवान ने कहा कि ना मुझे मानो, मैं कृष्ण हूँ, मैं सबसे बड़ा, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही मानो। यदि उसको कहेंगे कि साइंटिफिकली सिद्ध करो तो थोड़ा सा होती बात है। सुनंदा जी, आप जो बता रहे बात, आई थिंक दिस इज बिल्कुल सही है जी। एंड आई थिंक बिष्णुप्रिया जी विल बी द फर्स्ट वन टू एग्री कि जो कुछ होनी है, इट शुड, अनलेस इट हैज एन इफेक्ट इन द कम्युनिटी, इट कैन नॉट। यहाँ पे एक समस्या है जी कि अगर कम्युनिटी तक ले जानी हो, वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ मैन पावर, और उसकी तरफ थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। डू यू, आप विल यू एग्री विद मी सुनंदा जी कि क्या ले जाएं, व्हाट आर वी टेकिंग टू द कम्युनिटी? अब चरक की वो सूत्रस्थान इन द लास्ट अध्याय, देयर इज सम पॉइंट्स हियर अबाउट who is the good, I put the chat in the chat box, ki how do you know who is proposing something that will work? Aapne to sahi bataya ki it works, but how do we know whether the correct message is going to the community? And Sophie ji also has some contribution here, so iski thoda sa batao ji, aapki taraf ki how do we, isme standards honi chahiye ji, उसको अगर स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, फिर हाउ डू वी गेट दैट स्टैंडर्ड? ठीक है कि नहीं जी हमारी बात? सर वो बात ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड लाने के लिए तो फिर वो समस्याएं कुछ आएंगी, उनको तो फेस करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हम कम्युनिटी के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे अभी ये सेमिनार रखा है, इस तरह से हम पब्लिक के उसमें भी कुछ सेमिनार्स कभी रख सकते हैं कहीं। अच्छा ठीक। कम्युनिटी में तो थोड़ा सा उनको जनरल हेल्थ के बारे में बताएं, जनरली बताएं कि भाई इस तरह से हमें खाना पीना चाहिए, ये चीजें इस समय नहीं खानी चाहिए, जो जनरल आमतौर पर लोग करते हैं कि ये इस समय खाया तो गड़बड़ होगी, ये नहीं होगा तो ऐसा होगा। ये सामान्य तौर पर मोटी बात कहें, जैसे हम दही को कहते हैं कि शाम के बाद नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की हम कुछ चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये हम थोड़ा समाज में बात करें तो कभी कभी छोटे छोटे इस तरह से हम गैदरिंग करें, इस तरह की छोटी छोटी कम्युनिटी में भी करें, बहुत बड़े उस पर लेवल। जैसे कोई हॉस्पिटल में हम हैं जहाँ काम करते हैं, वहीं हमारे पेशेंट आते, किसी दिन ऐसा रख दिया कि उनको सबको बुला के बताया जाए कि भाई हमें कैसे करना चाहिए, क्या करें। तो थोड़ा सा हम समाज में शायद, ऐसा मैं सोचती हूँ कि शायद हम कुछ लोगों को ज्ञान तो दे सकें, जानकारी इस विषय में दे सकें कि अब ये ऋतु आ रही है तो इन चीज़ों का हम प्रयोग ना करें, कम से कम ना का जरूर बता दें ये नहीं करना चाहिए। हाँ के लिए तो अलग बात है। तो इस तरह हम कुछ उनको बता जाए। एक पेशेंट हमारे पास आते तभी उनको कुछ खास बातें बता दें कि ये समय चल रहा है और ये आपकी बीमारी है, इस समय हमें ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये ना करें। जनरली हम लोग इतना पेशेंट पे ध्यान कहाँ दे पाते हैं, पेशेंट ही आगे कभी पूछ लेता है या कोई खास बात होती है तभी हम कहते हैं कि आप ये मत खाइएगा। नहीं, पेशेंट डॉक्टर साहब कोई इसका परहेज है क्या है, तो हम मोटे तौर पर बताते क्योंकि इतना समय नहीं होता। तो इस तरह से थोड़ा सा उनके पास हम पहुँचाने की कोशिश करें, ऐसा मैं थोड़ा सा सोचती हूँ। सुनंदा जी, आपने जो बात बताया, आशुतोष जी की जो बात, उसकी बिल्कुल इट इज एग्रीइंग कंप्लीटली। आशुतोष जी की बात की हेल्थ लिटरेसी, कैसे टीचिंग पीपल छोटी छोटी चीज हेल्थ के बारे में,
and how to bring it in the context of daily life. I think Bishnupriya ji will agree with this. Ramadas ji will agree with this. I want Sir, to. Ramadas ji, please. Please. Sir, if you take in India, suppose if you take Kerala, within a village or in that surroundings, we have one Ayurveda college. We have one Ayurveda medical center, clinic, or whatever it may be. There is homeopathy, there is allopathy. Why all these three members together sit and do the treatment? Instead of that, they are just telling that is not scientific, this is not scientific, that is not scientific. Like this, the problem is coming in the society and they're illiterating the people. Actually, the people are literated. We are confusing them by giving all these wrong instructions. First, we have to stop it. For that, something has to be done. Otherwise, whatever be the level in the lab or whatever be the research you are doing, it is not going to help at all, because they are creating such a confusion in the minds of the people, in the local people, very badly. If all these three institutions, three different science, 3 or 4, even Unani is there in some villages. If all these 4 together taking the health census and health problems, and they're all giving together, sitting on the same munch, same stage, if they are giving the beautiful instruction for the people, research is not required in the buildings. It is there in the society itself. The people will be educated. Here, the problem is ego only. What Bishnupriya madam told, ego is the issue here. Everywhere. I am watching it. Being a Sanskrit teacher, I am watching it here. Everywhere. Thank you. Ramdas ji, please stay with us, because I think your point resonates with Sunanda ji's point, and Bishnupriya ji agrees. I want to just hear from Sophie ji. Sophie ji, aapse thoda sunaye ji iski baare mein. Galti kahan ji? On one side, we want to, what Sunanda ji is saying is, let us take this to the community. Everybody is agreeing with this. Ashutosh ji is agreeing, Bishnupriya ji is agreeing, and Sunanda ji says, and Ramadas ji. And you are saying we are being too retrospective in our thinking. So is there a conflict here? Is there a problem, or is your thinking more on the fundamental research side? Aapki taraf se kya hai ji? Sophie ji, you have to unmute. डॉक्टर मुतप्पा जी भी हैं अपने साथ सर. हाँ जी, मुतप्पा जी भी आएंगे, और हमारे साथ है जी राहुल. 9 बज गए हैं सर. अच्छा, almost finished. राहुल जी नमस्कार. अगर सोफी जी, राहुल जी नमस्कार जी. Just 1 or 2 more points, Pawan ji, bas. Because it's a very exciting discussion. Agar Rahul ji say, if we cannot get some points, Sophie ji say some points. Everybody's. Bishnupriya ji, last word from you. Shayad aap se, I think. Sir, nothing specific, but everybody should understand our own body, human system, it's a laboratory. You have raised, this is a very difficult thing. Yahan awareness hai hi nahi sharir ke. People don't understand their body. They are not connected with the body. And next to it, it is the physical, or the hardware is the physical body, and softwares are yet to discover. Yet to discover. Thank you. This is a very, very rich point, very important point. Now, Bajika, I'm going to, this is a wonderful discussion. This can extend even further, but time means I have to hand the floor back to Pawanji. Pawanji, thank you. Madan ji, 1 minute ke liye, for your permission. 1 minute. I want to bring to your notice. I want to bring to your notice. Please, just one sentence I read in Sanskrit. Please. And go on analyzing it. Please. You are hammering on prana, prana, prana. For that only, I'm giving one sentence. Please. What is that prana? Deha kendrikani parinama bhutani balani prana. Deha kendrikani parinama bhutani balani prana. And if you think for that prana, a detailed description, you have to go just before what is bala. These are not manifested from the whole of the Vedic script
or the whole of Ayurveda. This is up to date what given by Anandamurti in his Ananda Sutram. Right from the beginning to the end, he covered all the things, emergence of life, everything, what is energy, what is consciousness, and everything, what is Chaitanya. And at the same time, I'm giving little big support to Ramdas ji. A voluminous texture you want to put like an ocean of Ayurveda in a narrowed glass, neck narrowed glass, or whatever you give the shape of material science. This, you are speaking from the side of material science. Whereas you want to invite the philosophical science and material science, everything, a holistic science. How can it be possible? Yes, I think it is already been given. Yes, it is already been given. It is your part to go for laboratory researches. How can you ask that? You ask us, put in the terms of materiality, put in the terms of materiality. For example, little forward. If anybody asks, what are the koshas? How can I explain in the material science? What is Kamamaya kosha? What is Manomaya kosha? What is Atimanasmaya kosha, Vijnanamaya kosha, Hiranyamaya kosha? Can it be explained in the material science? No. For that, you have to understand what is physical body, that is, which is visible to you, and then the controlling mind, and what is physico-psychic, and then psychic, and supra-psychic, and then spiritual. Can it be explained in the material science? But only the personality, the entity, which can understand, he can only understand. If you bring a standard 1 fellow to the level of PhD, can he understand? It is a PhD level. Ayurveda is PhD level. It is ancient science. Rishis given. That is why very long discussions I am finding that you want to bring all of philosophical way of livelihood of Ayurveda to a material science. I think Sophie, Gomaji, I'm going to interrupt you because I think Pawanji is waiting for us, but I want to agree with you completely. And I also want to say that Sophie ji brought this point out very nicely, which is that we need to realize something different from that material perspective. And this is a big debate. This is a very, very big debate. And I think I would like, Domaji, before I pass the floor to Pawanji, I wish that you will take the leadership for us to have a full-length discussion on this one point. And I would like your guidance so that you can bring all of us together, maybe in this platform, maybe elsewhere, where everybody can come together and take us forward. Domaji, I hope, my apologies. I'm just going to pass the floor to Pawanji, but the offer of a full-length discussion on what you have just said, along with Sophie ji, along with Bishnupriya ji, and several others, we will come together to open this. Ramadas ji and several others, we will come back to this. So, with your permission, Domaji, could I pass the floor back to Pawanji? Pawanji, pranam. Madanji, thank you. Before falling asleep of Pawanji, just I'll add that if you invite my sense of approach, that my sense of explanation, how many hours it will take? Hours I don't say, leastly I start reading right from the first sloka of Ananda Sutram till the end of 5 chapters of end of that Ananda Sutram. Totally, you find anything which is not covered out of it. You well, say you after reading, after listening, being a scientist, you can say that not covered. Any part of life or society and everything is not covered. It is totally covered in terms of science, but put in the slokas, Sanskrit slokas.
and very simplified, but it requires a hot brain and very active brain to understand. I will read one day. I will read one day the whole of Anand Sutra. You are our guide. You are our teacher on this space. Very sorry. I cannot be guide because the guide will be Paramatman. How he pushes and how he takes work from me till to the last breath. He knows. Now kindly allow me to communicate myself. Please. The time is over. Tomorrow is Shivratri. I have to wake up early, and tomorrow night I have to wake up completely. So please be sympathetic with me. Please be sympathetic with me. Pawanji, the floor is all yours. Thank you. Thanks. So from my side, thanks to all the speakers. Thanks for this wonderful discussion. Sophie ji. I would like to request now Professor V.K. Agnihotri ji. And before that, I would like to request you all, please attend tomorrow, because in late night, puja will be started. So we have shifted our program from 6 to 5 p.m. We will start our program on 5 p.m. Spiritual and medicinal importance, Shiv Stuti Gayan. This will be the uniqueness of this program. Respected Agnihotri ji. Namaskar. Thank you, Dr. Pawan Sharma ji. Thanks our respected Madan sir and all the very revered persons of today's webinar, along with Alok Sharma, our Bishnupriya Sharma ji, Vivekanand Sharma ji, Neeraj Thakur ji, Bishnupriya Madam ji, and Rajin Patankar ji, Safi ji, and Doma ji. Well, I am afraid that since today's webinar is so voluminous, its length and breadth is so high that I'm afraid I may miss some very important points. As I left on that day, I'm very sorry for that, that I could not spell by name Dr. Baljot ji from Sarava, that she presented very well. Anyway, I just commit sorry for that. And what was the today's discussion is, I will simply say in a light mood that as we are completing 10+2 with biology science, up to 12th we were science student, and those who want to maintain themselves as a science student went for the medical sciences, and those who are interested to know, get the knowledge, the gyan, they came to Ayurved. So we are lucky enough to become BMS Ayurved graduates and Ayurved postgraduates and on and on. So we are full of knowledge. They are having the scientific backgrounds. Before any invention of Galileo or Albert Einstein or any science, so-called modern science, had there been any knowledge or not? If had been there, the Vedas were there. So goes the case with the Ayurveda and Ayurveda. Charak Samhita में ही लिखा है मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि. He used both the terms, ज्ञान विज्ञान. The mental disorders may be meted out with the help of the Gyan and Vigyan, the information, the knowledge, and its a scientific implementation. This is simple. No, and we are not so poor, and we are not so compelled to follow or to accept them if they are not going to follow ourselves. Professor Ramdas is kind enough to, and Madam Bishnupriya is kind enough to understand, if they don't know Sanskrit, they cannot know and understand the knowledge of the science of our Ayurvedic system of medicine. हम इतने गरीब और मजबूर नहीं हैं कि उन जबरदस्ती अपनी नॉलेज उन पर थोपे या उनकी लें. उनकी इच्छा है बोले. मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत ओपन हार्टेडली, बहुत ही हम्बली कह रहा हूँ कि हम इसी के लिए लड़ते रहेंगे. हमारे पास दो पक्ष हैं. एक वे जो केवल आयुर्वेद अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, आयुर्वेदिक साइंटिफिक है, इसके लिए चर्चा करते रहें, और एक वे कि हम पहले इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद आयुर्वेद को मानेंगे. ये वाम मार्गी और दक्षिणपंथी का मामला नहीं है. इतनी एस्टैब्लिश साइंस है, हमें है ही कितनी दम. 400-500 साल पहले तुलसीदास जो लिख गए वो ही इतने जबरदस्त है कि उससे पहले वहां पर साइंस वाली बात ही नहीं आती है. आप सोचिए, और हमारे तो 1 शताब्दी और कितने पुराने ग्रंथ है. खैर, लेकिन आज प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे रहे, और यही वजह है
कि हम वो गीता और विज्ञान जितना भी कोशिश करते हैं गीता की बात शुरू करते हैं। डॉक्टर आलोक शर्मा ने गीता की बात करी, इसके अलावा जितने हमारे प्रेजेंटर रहे हैं उन सबने एक ही काम किया, सबसे पहले आयुर्वेद के जो बेसिक फंडामेंटल्स है, आयुर्वेदिक का जो आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको स्थापित किया, जिससे कि उनके द्वारा कन्वे होने वाला ज्ञान साइंटिफिकली माना जाए। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमारा ज्ञान हमारे आचार्यों ने पहले अपने ऊपर अनुभव किया, उसके बाद बताया। और मॉडर्न साइंस क्या करती है, वो एक्सपेरिमेंट पहले लैब में प्रूव करती है, टेस्ट करती है, पॉजिटिव हो जाता है तो यूज में डाल देती है, उसके बाद विड्रॉ कर लेती है उससे जब साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो रेस्ट्रिक्लिन हो, चाहे पेनिसिलिन हो, चाहे कुछ भी रहा हो। इसलिए उनकी स्थायी नॉलेज है नहीं, केवल सिस्टमेटिक क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड साइंस, दैट इज वेरी क्लियर। हमारा पूरे वात पित्त कफ, हमारी प्रकृति विज्ञान, हमारा सारा सिस्टम, दोष विज्ञान, सब कुछ सिस्टमेटिक है। अगर रस धातु का निर्माण सही नहीं हो रहा है तो कैसे कोई कल्पना करेगा कि शुक्र धातु का निर्माण होगा? इसमें कहाँ पर साइंस की लैकिंग है? इसमें साइंस कहीं लैकिंग नहीं। हमारा अगर यही सिद्ध करें, आपने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ के लिए हम सबको जाके बताएं कि ये आपस में तीनों पैथिक लोग बैठे हैं, बताएं ये अच्छा है, ये अच्छा है, सबको बताएं कि भाई मंजन करना चाहिए, दांत मांजना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन वो पूछें क्यों करना चाहिए भाई, इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या? तो फिर वही समस्या गले पड़ेगी। जो चीजें दिनचर्या राजचर्या में कही गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी चीज हम उनके लिए जरूर कहना चाहेंगे, डॉक्टर शिल्पा ने जो पॉइंट रखा था कि उनसे उनके कलीग ने किसी ने पूछ दिया कि हम तो मॉडर्न मेडिसिन में लेबर इंड्यूस करने के लिए सिंटो लगाते हैं, आपके यहाँ आयुर्वेद में क्या है? इतनी थैंकलेस बात दी और मुझे दुख है कि वो इसका जवाब नहीं दे पाई। अरे भाई, वो लेबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिंटो लगाते ही क्यों हैं? जाके पहले वो आसन प्रसवा की चर्या पढ़ें। पता नहीं क्यों नहीं, आसन लेबर नॉर्मल होना एक प्रोसेस है, उसके लिए अगर एएनसी हमारा गर्भणी चर्या जो बताई गई थी वो पूरी फॉलो की गई है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ऑटोमेटिकली लेबर होना चाहिए। सिंटो लगाने की नौबत मॉडर्न को ही क्यों आती है? और रही बात मूल गर्भ की, जब वो सीजर करते हैं तो हमारे मूल गर्भ को भी सीधा करने के लिए बैलगाड़ी के पीछे बांध के और चलाने के और क्या क्या व्यवस्थाएं बताई गई थी। तो सॉरी, शिल्पा को चाहिए कि वो पढ़े और देखें कि आसन प्रसवा की चर्या क्या क्या होनी चाहिए, और उससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो हम बहुत एकाग्र से सारा सुनते रहते हैं और उनको वहां पर वो निरुत्तर हो गई, हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। आसन अगर गर्भणी चर्या सही रही होगी तो आपका प्रसव भी सामान्य होगा। फिर जो सद्या प्रसूति के जो लक्षण बस बताए गए हैं उनके पीछे हम क्यों पड़े? हाँ, अगर आज की लेडीज न तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को ठीक रखती है, ना फिर अब और तो वो चाहती है पेनलेस डिलीवरी हो। वो पेनलेस डिलीवरी खुद चॉइस करते हैं। हमारी लेडी कहाँ तैयार है पेन लेने के लिए? पेन लेने अगर वो लेबर पेन्स लेते हैं तो निश्चित रूप से डिलीवरी नॉर्मल होगी, अगर पेलिमेट्री सही कुछ है तो इसमें ज्ञान वर्धन की जरूरत है, और ये ज्ञान आयुर्वेद में, मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। जो भी हो, हम सभी आज के स्पीकर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं। डॉक्टर हमारी विष्णुप्रिया जी ने सारे मदन सर के क्वेश्चंस को धारा प्रवाह आंसर दिया, और छोटा बालक है हम तो कहेंगे जो हमारा पाठक है वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएचयू में शरीर क्रिया विज्ञान में, और दूसरी वाली जो थी शरीर रचना में। तो शरीर क्रिया शरीर रचना वालों तो सब कुछ क्या, लेकिन इसके मर्म को डोमा जी जानते हैं, प्रोफेसर रामदास जी जानते हैं, और विष्णुप्रिया जी जानते हैं कि वास्तव आयुर्वेद जो है उसको समझने के लिए आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में ही समझना पड़ेगा। कितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट बन जाए, चाहे वो पल्स रीडिंग करने लगे, चाहे कुछ भी करने लगे, लेकिन रसात रक्तम के बारे में मॉडर्न मेडिसिन इस्टेब्लिश कर दे फिनोमेना तो हम जाए। उसके लिए हमें रसाग्नि, धात्वाग्नि सबकी चर्चा करनी पड़ेगी जो उधर नहीं है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मदन सिंह जी ने कुछ 3 स्लाइड रखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम मिस कर रहे हैं, सोचता हूँ आज बता ही दें। जो स्रोतस वाली, अगर प्रोफेसर रामदास जी है तो भी इसको शायद सुनेंगे। प्रोफेसर रामदास जी ने कहा कि जो स्रोतस की बात कही है, उन्होंने स्रोतस का जो इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन लिखा है उसमें तो कह दिया उन्होंने कि जहां पर कि रस धातु का हो और तो उसको हम कहीं ना कहीं रस की बिजनेस मान लेंगे। सच क्या है? श्रवणात् श्रोत्रांसी, जहाँ श्रवण कर्म हो। हमारे बीएचयू में, हमारी डिपार्टमेंट में एक जबरदस्त सेमिनार हुई थी जिसमें प्रोफेसर एलबी गुरु साहब, प्रोफेसर शुक्ला जी ने इतना ज्यादा डिस्कशन 2-2.5 घंटे हुए थे। तो लास्ट में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, सर आप ज्यादा अच्छे से इसको पकड़ेंगे, कि एनी एपिथेलियल लाइनिंग which has got pores is said to be स्रोतस। Any epithelial lining which has got the pores is known as स्रोतस। तो श्रवणात् श्रोत्रांश, इसीलिए कहते हैं धमन्यात् धमनी, जहां पर धमन हो रहा है, जहां पर जो किसी वॉल्व है उसमें जो इम्पीटस डील होती है, डेवलप होती है, इसीलिए वो पल्स बनती है। बहुत ही टिपिकल
तो इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन के लिए तो इन्होंने बात कर दी प्रोफेसर रामदास जी ने, लेकिन उसका फिजियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वहां पर श्रवण की क्रिया हो रही है, भले ही वो लिव की ऊजिंग होती है, इवन ऊजिंग का जो है तो वो एक सिंपल पोर इज सेल्फ इज सोतस, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, हम उसको छुपाए बैठे थे, हमने कभी चर्चा आएगी, आज बिल्कुल पक्का हो गया। तो एनी एपिथेलियल लाइन व्हिच हैज गॉट पोर्स इज नोन एज स्रोतस। बाकी और सबका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा, समय पूरा हो चुका है सबका, इसलिए हम जो है सबको धन्यवाद करते हैं। आज के स्पीकर को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच। ओवर टू डॉक्टर पवन शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ, क्या करूँ, गलत आदत पड़ गई है जल्दी सोने की। नहीं, ज्ञान तो रुकता नहीं ना, वो तो बिल्कुल अनवरत है, इसलिए सबकी चर्चा होनी भी जरूरी है। और मदन सर का जो मॉडरेशन है ना, उसमें तो कोई एक बार दिख जाए, गजब 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 साहब, उसमें तो कुछ कहना नहीं। आज हम लोग 14, 15, 13 रह गए, वो भले ही भाग जाए लेकिन वे नहीं छोड़ने वाले, उसको 3 दफे नमस्कार करके पूछेंगे कि आप हैं नंदिनी जी, आप हैं सुनीता जी, आप हैं, तो वो ये बड़ी कैचिंग है पावर, इससे बहुत बड़ा सीख मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।